Presh, thanks Another. Yes, Manoj. अभी टाइम है तो कैन वी हैव स्मॉल एक दो क्वेश्चंस आपसे बात कर सकते हैं? Just 1 second. Yeah, I'm just trying to set up a few things and फिर कर लेते हैं। ये 5 मिनट दे दीजिए बस, ये थोड़ा सेटअप कर लूँ मैं, हाँ फिर मैं आपके पास। हाँ I'm sure you.
Good evening, Hi, everybody. Good evening, Prayash. How are good, you? good All good, ma'am. How are evening. you? Very good. Good Okay. evening. Hi, Shalini. Hitaishi, I can see you're connecting. I'll just give you the host access for a certain period of time. That co-host thing is still, Shabir was not able to sort that out. I think it's something with the subscription that they have. But is that okay? Before I give you the host access for some time, and then, I can take over later. Yeah, Priyash, that works. Cool. Hi, Taishi. Hello, hi, lovely ma'am. How are you? Great, thanks. Yeah, I've given you the access. Right. So while other people are joining, Manoj sir had said that he had a couple of questions. So I'll just take that up, Okay. and then we can go ahead Yeah, if anybody else also has yes. any questions. Just before we start for today, I just wanted to understand, get a feeling from everyone, like how is it going? It's been 2 weeks now, and we have done a lot of exercises. I see a lot of engagement on the group also, like people are actively participating and, creating content and doing their best to give this community a shape. So I would want to understand how has the experience been so far, and if there is something in particular that you're looking forward to, which we can definitely we can work with Priyash and get that added in the curriculum. So can I? Yes, please. So I think it's an awesome session. I would say. I mean, a lot of things we are learning so far in terms of our social media as well as some techie things. We have not even gone through kind of. But then the way Prayesh is giving the inputs, it's easy to grab and of course execute also. So that part. And basically, I am basically excited to see because the kind of digital community we are building, it will be a very big. I mean, the kind of vision ED is having. So the same pitch also, we are also having the vision. So this healthy tribal, the kind of community we are trying to build. I mean, in the future course of within a year or two, it will be a large community by which we will be helping to the people, of course, building our business also. So this credit goes to all of you, and especially Lavin Didi for building a kind of platform for all of us. So this is awesome, I would say. Um, can I go? So basically, yes, absolutely. I second everything Manoj has said. Just to kind of give where we are right now. So everyone's learning, whoever has time is contributing. Most of us are very active. And so this week has all been about one group. Thanks leading to Shalini is all about our logo. And Shalini will, I just wanted to know if she should do that in the beginning. She wanted to go over a PPT about our logo. We have finalized it. And then a group of us have been trying to do and learn about the templates. So that's going there. And while doing all this, oh yeah, so the bio I was doing, I haven't finalized it, but on Thursday we'll be talking together and then I'm going to send it to Hitachi. I'll send it to you so you and Simrat can also look it over. Sure, And then definitely. Priyansh can also look it over. The one question I have from everything that we've done so far, that's for Priyash. Priyash, you had asked us to make templates, right? So Yep. yes, the still templates, yes, we do. We're a little bit struggling on the video part of it with Lumen 5. And also my question is, how can we make a template of the video? Because it's going to depend on the content. As we go through Lumen 5, that all changes. So I think I'm actually not understanding how we'd have a template for a reel or a video. Yeah, so when I say having a template for video, and you've rightly mentioned that when so many people are going to be creating videos, there could be slight changes in the way that content is being put up. But primarily, what is most important is if where is going to be the position of your logo, right, throughout the video, right? Are you going to be using text? If you are, then what color of text
would it be going on there, right? What would be the font? What would be the size? It should not be that, every other video is coming with a different font or with a different color, position is changing. So just so that it looks more professional looking, that's the kind of activity that you should be focusing on. Um, if it is possible uh, to have a set template of how video is going to be flowing, that's fine, but it's not very important rule to follow, to be said, right? You'd have to be creative. It's fine to go here and there as long as the brand is still being visible properly. Understood. Yeah. We'll Yeah, focus Priyash, on before we start, if you could just share the YouTube link also for I today. he shared. has. I'll just do that once again. He Yeah. has, thanks. We got it. We got You it. We got got. it? Okay, okay, cool. Yeah, Thank yeah. So, Prayesh, my question was the same thing, a little ahead. I was asking in Lumen 5, we don't have any application in place. So it has to be prepared on the laptop only because the Canva, we have the application by which we can make the videos or the other things with the mobile only. Yeah. So So, Lumen 5 is primarily a desktop application, right? Or you'll have to be creating things on desktop or laptop itself. Having said that, there are certain more advanced editing tools, and the good part of Lumen 5 primarily is that you are using AI to create videos, right? But if you want to be doing something on your mobile phone, then Canva is there, right? Or for that matter, there is VN editor, in shorts. These are some more applications. I'll just put them in the chat, but they are primarily mobile phone video editors as compared to video creators. Lumen has a different kind of approach, है ना? वो ज्यादा फोकस करता है कि आपने टेक्स्ट डाला और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया वीडियो पे. Lumen तो basically बहुत easy है. The moment I Hmm. place some text, immediately I will get the Exactly, video. exactly. But same thing, can we change the colors also into video or not? Yes, you Because can. अगर आप I can't. Lumen 5 में लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, there's an option मीडिया, ब्रांड कलर्स. वहाँ पूरा एक बोर्ड है. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू ऑप्शन देखेंगे, वहाँ पर you can set up your own colors, or you can change colors. You can add your own pictures, add your own video shots. अगर आपको कोई AI ने जो वीडियो दिया है वो अच्छा नहीं लग रहा है, you would want to replace it, you can replace it. You can type, let's say for example detox, तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो क्लिप्स मिल नहीं, जाएंगे वो दैट यू आ कैन गए प्ले. थे, वो मैंने ट्राई किया था, वो डिटॉक्स के फिर मैंने ड्रैग किया था अपने जो पीपीटी बनाया था वीडियो में. माय क्वेश्चन इज कि लेट्स से वी आर इनटू हेल्थ, वी वांट टू हैव द बैकग्राउंड ऑन द ग्रीन कलर फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल. सो वो जो वीडियो में प्ले करूंगा बेस्ड ऑन द कंटेंट और टेक्स्ट, so can we standardize our template in a way at least the background should be in a lighter or whatever color we Yes, want, and then rest around the content or other pics yes, and videos will be changed. it is there available in Lumen 5. In the free version, you will not be able to do that. But if you take that subscription of $9 per month, so you can put up your brand presets that every video will have these specific colors, these specific logo, the position is going to be here and there. राइट, तो वो पेड वर्जन जो है उसमें आ जाता है, that throughout all the videos whoever is having the access. So ideally what you can do, if it is feasible, you take one Lumen 5 account, right? 9 $10 per month, whatever that it is, and you pass it to all the team members. So wahan pe, and when you setting up that Lumen 5 account, you can add your logos, logo colors, branding colors, everything, and then that would be going ahead and being utilized as a video creator application for everyone. So you mean So to say that one? one particular, oh, sorry, go ahead, Manoj. Yeah, Didi, please. I think So you that asked me a one question. particular account, everyone will have to access to make Yeah. videos. So you can create a separate email ID, for example, your community name @gmail.com. Just pass Yeah. it on to everyone for them to be able to access. And when I say everyone, I guess there's going to be a couple of people who are primarily going to be focused, right? So 5 6 people who are going to be focused on creating content. Yeah. Just give it to Yeah. them, add those presets, and with the help of those presets, things can be done very quickly. Yeah. Gotcha. Right? Great. Thank you. Perfect. No worries. And one more thing, while we create any video or snap, this thing, Mm-hmm. I mean, having some, though it is done, but then initially I was having some struggle to send this thing on the anybody's WhatsApp number or something. Then after I download and then I
could able to find share this Lumen 5 I'm talking about. The video? I mean, the moment I prepared the video, Huh? then when I was sending to someone, there was some You got muted, Manoj sir, for some reason. simple options sent to your WhatsApp or something. So that's what I'm asking. Nice. So it does not have that, key directly when the video needs to be downloaded, right? It will Download. have to be downloaded. Then you can, rather than, if you want to be sending it on WhatsApp, then it would be good कि आप उसे you upload it on. Are you talking about sharing directly with people? Then you can of course upload it on WhatsApp from the web. So you have a web version of WhatsApp, right? So you use that web version, upload it from there, and share it with other people. Okay. Understood. All right. Anybody else? एक्सक्यूज मी सर Yes. Go ahead, ma'am. ये जो हमने लास्ट टाइम जो लोगो रेडी किया था अभी हम उसको यूज कर सकते हैं I think Loveleen ma'am was saying that she's going to be presenting the final version, right? And if you all have decided, then I think it would be a call, ma'am, that you can take that if they can start utilizing those logo. We just, because not everyone was involved in creating it. So if you give us time, Shalini will quickly go over that. So that way Sure. you also know the process. Yeah. Sure. I So think Deepak we'll had do a that. question If before there's that. any other questions, we'll take those questions very quickly and go through the logo. And then primarily, I'll just set the agenda. Last class, we had session where we mainly focused on Instagram, right? Setting up of Instagram business activities, etc. Today, we'll go ahead and look at things on Facebook. Facebook पे जो हमारा पेज बनेगा वो कैसे बनेगा उसको हम WhatsApp ideally there should be one WhatsApp business number उसके साथ कैसे लिंक करेंगे and how can we set up messenger automations and how can we schedule content from Facebook which will go both on Instagram as well as on Facebook, right? So that everybody will not have to create, and you can assign your team members that by the date of 25th the content for next month should already be ready, prepared, scheduled to go both on Instagram as well as on Facebook. That's what we'll be seeing today as well. So I see Deepak sir, your hand is raised. You can also go ahead and ask a question. So Sorry, just Hitaishi, I just got a message that somebody's waiting in the waiting room. Sejal's there. Yeah, I have been admitting, I mean, there's some issue. I'm on it. I've admitted Okay, her, thank but you, it thank you, still thank says you. Yeah. joining. Yeah. yeah, Priyesh sir, I just wanted to ask that while creating posters, should we also fix up the position of logos? Like Absolutely. every time we have, so position of logo have to be fixed, right? Yes, वो आप Number हमेशा second, G. Yes. Second you question know is आपको that, कहाँ should okay, sir, my second question is that in Canva, if we take a pro version or Lumen Pro version, maximum how many person can use it at a time? There must be a limit or there is no limit? So there is a limit when you add people as users. Again, off the record, आप लोगों को एज अ यूजर ऐड करते हैं. जैसे कैनवा में एक अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं तो उसमें 3 या 4 यूजर को ऐड कर सकते हैं, यानी 4 अलग अलग लोग विद देयर डिफरेंट ईमेल आईडीज, right? Same happens on Lumen 5 as well. But the turnaround is आपने जिस email ID account से बनाया होगा Canva का account, right? या Lumen 5 का account, वो email ID password आप share कर लें with people so that with the help of that itself they can use. And I've been running an agency और हम यही करते हैं, ऐसे ही पैसे बच जाते हैं, right? Thank you so much. All right. Okay. Then Shalini, I guess. Yeah. Should we start? I think, Priyash, I think we may have lost something. His net is not good. He's saying something, I guess. Back here. Yeah. You guys hear me? I can see Yes, my now name. we do. You were Yes, paused for a we bit. lost you in between. Oh, all right, all right. I'll just reclaim host Hitaishi if that's okay now, and pass it on to Shalini. All right, Yes. perfect. So Right. There you go. I've made you the host, Shalini. Sure, thank you very much. First of all, good evening to everybody and good morning as per your time schedule. And in the entire journey, when we were deciding what logo should be,
सो वी थॉट कि बाकी लोगों को रिसर्च करते हैं कि एक्चुअली लोगों को बनते कैसे। तो लोगों में मैक्सिमम लोग कॉन्वर्जेशंस नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू विल सी कोई आइकन या कुछ भी अगर क्रिएट होता है, तो जैसे नाइकी का एक ऐसे टिक मार्क है, तो आप कभी भी नाइकी लिखा हुआ मैक्सिमम नहीं देखते, आप सिर्फ टिक मार्क देखते हैं। बट क्योंकि नाइकी इनमें बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आपको पता है कि वो जो टिक मार्क है, जस्ट अ सेकेंड, सो वो जो टिक मार्क है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस ब्रांड से कनेक्टेड है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द पीपीटी सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डिसाइडेड व्हाट। सो जस्ट अ सेकेंड, या सो हियर मतलब थोड़े बहुत कुछ लोगोज हैं जो आप देख सकते हैं। ओवरऑल इस लोगो में कहीं पर भी बहुत कुछ नहीं है, किसी भी लोगों में वो सब कुछ बता ही नहीं रहे हैं। मतलब दे हैव यूज्ड कलर एज पर व्हाटएवर द थीम वाज। गोइंग फर्दर, again, there are people who are using only icons and there are people who are using only the names, but अच्छा, ये sorry yeah, sorry to break you there. While you are there, because you are making a very valid point, I'll also like to point out कि बहुत सारे brands के जो पहले logos होते थे, जैसे आप अगर Warner Bros को देखेंगे आप, या कुछ ऐसे brands को देखेंगे, एयरटेल को देख लीजिए, ये सारे brands ना जहाँ पे written material ज्यादा होता था, अपने logos को ये रीब्रांड की जगह डी ब्रांड कर रहे हैं. दे आर मेकिंग देम लुकिंग शॉर्टर सो दैट डिजिटली ज्यादा है. अंडरस्टैंड वन थिंग कि पहले जो लोगोस हुआ करते थे, दे वाज प्राइमरली कि वो प्रिंट मीडिया पे जाके जाएंगे तो इट शुड बी विजिबल दैट वेज. नाउ लोगोस का, अपने ब्रांड का मैक्सिमम यूज हो रहा है ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. तो जितना ज्यादा आइकॉन स्पेसिफिक एंड वेरी शॉर्ट एंड स्वीट जैसा लोगो, उतना बेहतर. सो या शालिनी, कंटिन्यू. आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट पॉइंट. absolutely, please feel free to add whatever you feel, because this was actually a research exercise, because हम लोग उसमें अटक रहे थे कि हम लोग पूरा का पूरा सब कुछ चाहते थे. We wanted every word to be there, but we'll have to actually understand कि या तो आइकन होगा, या फिर जब नाम छोटा होता है, नाम कभी भी बड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम राम अवतार है, तो पूरे का लोगो नहीं बनाओगे, मे बी राम का आप लोगो बना लोगे, so that people connect with the thought. Now times are changing on that process as well. So going further, there are colors to every brand. So whenever we were talking about the colors, so I used to study a lot of colors in the process of doing marketing. And green wala green shade ho gaya, ya white shade ho gaya, ya black shade ho gaya. These are the particular colors which are being used by a lot of brands who are talking health, growth, as well as longevity as well. So we thought of these three colors, and this is a brighter green which we are using, जो पहले हम darker green को use कर रहे थे. So going further, I've put down one simple thought here in regards to कि McDonald's का जो है, आप हमेशा आग देखते हो, आग से आपको McDonald's पता है. वो McDonald's अगर क्या पता जीरो बना हुआ था तो you might have thought of that as well. But ये लोगों में थोड़ा सा tweaking होता है जो सारे brands करते हैं depending on the content वो जिस तरह से share करना चाहते हैं. Just a second. So, for example, यहाँ पर सिर्फ छोटा सा एक icon है. What he was mentioning was absolutely right, that we can actually decide on the positioning जैसे भी हमें आगे इसमें जाना है. Going further, this was a thought because we thought कि सिर्फ simple THT लिखा हुआ, bold characters, whether you see a diary इससे बना हुआ, या आगे जाके आप देखते हो किसी चीज पे लगा हुआ है, तो you would think about it. अब आप बिल्कुल simply वैसे सोचिए जैसे आप XS का लोगो देखते हैं, सिंपल X और X हमारा जो लिखा हुआ होता है, उस तरीके से we go further. I think somebody requires to be added. I'm adding. So just a second. So we used various colors also while we were studying about the colors. We used yellows also. We used greens also. Uske baad we decided we will actually come down to this shade of green because it was more of life, more of freshness to it, more of the thought process of detox was also there. And yes, when we are using this green, we can actually tweak it with the black in the background. We can further tweak it as a simple white logo in the background with green or any other thing. अभी हम चाहते थे कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से आए, but the thought was कि this entirely cannot be a logo because it is too cluttery. It is like we are saying everything about ourselves. So उस तरह से हमारे icon में सिर्फ THT इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा when we go on Instagram as well, or anybody would like to see. So now going further in regards to कि वो किस तरह से दिख रहा है पोस्ट के ऊपर, अलग अलग चीजों को हमने यूज करके देखा. तो येलो वाज डी अनाउंस्ड, एंड इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक लोगो है जो हमने फाइनल किया है, जो आप व्हाइट में भी यूज कर सकते हैं और ग्रीन में भी यूज कर सकते हैं. व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक. सो ग्रीन इज आवर कलर, मेन कलर,
व्हाइट एंड ब्लैक गो हैंड इन हैंड, और किसी भी लोगों के वर्जन व्हाइट और ब्लैक में हमेशा एक्सेप्टेबल होते हैं, इवन ऑन द ट्रेडमार्क साइड ऑफ इट. सो गोइंग फर्दर, अगेन अगर व्हाट इफ ऐसा ही ग्रीन हमने यूज करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, देन आई इवन ट्वीक्ड इट अ बिट in regards to कि किस तरह से हम लोग logos को use कर सकते हैं. And in regards to, I don't know, maybe this was the second step which I thought of, which was a calendar altogether. We can have motivational Monday, thoughtful Tuesday, because everybody will be, and days can be divided with people. And vice Wednesday to choose Thursday, free Friday, spiritual Saturday, sunshine Sunday. So for example, going below on these, there can be categories: exercise and physical activity, your story testimonies, think about health routine. These are some of the things I have noted down: women and men's health, aging senior citizen, recipes, mental health, and etc. There are many more. But इस हर category के अंदर आपके पास और भी बहुत सारे categories हो सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग later on बात कर सकते हैं to decide on. And going back, we've decided on this logo. This is how it's gonna come. If somebody wants कि ये पूरा का पूरा दिखना चाहिए, तो ये नहीं दिख पाएगा initially. मेन फोटोज पे हम लोग छोटा यूज करेंगे, बट जब कहीं पर हमें पूरा का पूरा ब्रॉडर लिखना होगा, बिकॉज ऐसे भी स्पॉट्स आते हैं बाद में जाके, तो हम लोग इसको इस तरह से यूज करेंगे. या आई गेस आई एम डन. I think that was brilliant, Shalini. That was brilliant, and the kind of thought that you might have put in. Were you a brand consultant or a brand manager at any point of time? I create brands, yes. I Yeah. worked with McDonald's, yeah. I worked with McDonald's, I worked with Coca-Cola, I worked with many brands. Right, guys. So you've got a great person in the mix in terms of understanding brand and positioning. So I think that would be really, very helpful. I like the way, जैसे वो, even when you look at THT, so it's green, it's good, and उसमें ना थोड़ा सा वो tree वाला element भी आ रहा है. I can see H के नीचे वो roots जा रहे हैं, right? So it's a very nice way. It's hitting. I mean, when you look at that THT, it hits you that it is something, a brand which is for nourishing, for longevity, for creating deeper roots. So I think that's a very nice thing that you guys have done. Anybody else would like to go ahead and talk about that as well before we move on for today? Sir, is it possible to have one fixed logo so that we don't have to? आप म्यूट पे हो गए हैं दीपक जी. Yes, sir. Sir, is it possible to have one particular logo so that we don't have to tweak it with the background every time? So what happens is primarily दीपक जी, हम लोगों के भी आपके पास .jpg वर्जन्स होते हैं, .png वर्जन्स होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट वर्जन्स. तो अगर आप ट्रांसपेरेंट वर्जन ले रहे हैं तो बैकग्राउंड अगर आपका ग्रीन है या ब्लैक है या ब्लू है, तो ट्रांसपेरेंट वर्जन इज स्टिल गोइंग टू फिट इन ओवर देयर. बट दैट इज द रीजन व्हाई वी आल्सो टॉक्ड अबाउट क्रिएटिंग सोशल मीडिया टेम्पलेट्स. कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट वाटर वाला जो एग्जांपल दिया था, that could be the green color in the background और उसमें हमेशा white या dark green with white logo आ रहा है. So once those templates are set from the team side, आप उन्हीं को ही use करते जाइए. You will not have to then constantly change the background. You will not have to constantly change the logo. एक templates आपके पास आ गए हैं कि जब भी हम normal 1:1 के post डालेंगे तो ये हम post होगा, राइट? अगर हम 4:5 का डाल रहे हैं तो ये टेम्पलेट होगा. दैट इज वाई वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग टेम्पलेट्स की बार बार चीजें बैकग्राउंड में चेंज करने की किसी को भी जरूरत नहीं पड़े. ठीक है? ऑलराइट. Anybody else with any other question or any inputs? I think in terms of the assignment as well, जो पिछली बार का था, that was to decide the templates, that was to finalize the logo, that was to find out the content calendar as well. And I see Shalini, that content calendar also looks quite good, because अभी आपने एक problem solve कर दी, that every Monday there will be motivational Monday, Tuesday को thoughtful Tuesday, then everything जो sub topics हैं will focus on that. The motivation, as Shalini had put up, it could be testimonials, it could be a story, an inspiring story from within the community or from more and more people who will be joining in after looking at the results. Thoughtful Tuesdays could be related to detox, could be related to mental well-being, right? So वो बस sub topics अब आपको मिलते जाएंगे. So I think that's also a very good head start that you've got, right? So
इंस्टाग्राम की प्रेजेंस आपने बना ली, इंस्टाग्राम पर आपने देख लिया कि अलग अलग तरीके का कंटेंट कौन सा होता है, हाउ डू वी गो अहेड एंड अपलोड इट, एंड ऑफ कोर्स देयर इज वन स्पेसिफिक सेशन जहाँ पे हम थोड़ा बहुत रील्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर जो प्रोबेबली मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से रील्स बना के डालना आता होगा, बट फॉर द एवरीबडी टू कम ऑन टू अ सेम पेज, क्या होती है रील्स, उसमें हम म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं, वॉइस ओवर कैसे डालते हैं, दोस टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सो दैट एवरीबडी इज एबल टू डू दैट। बट आज का जो प्राइमरी फोकस है दैट विल बी ऑन जस्ट लाइक जैसे हमने इंस्टाग्राम पे अपनी एंटिटी बनाई एज अ बिजनेस पेज, फेसबुक पर भी हमें अपना एक फेसबुक पेज बनाना होगा, राइट? तो फेसबुक पेज विल बी एज अ कम्युनिटी पेज विल बी आर मोर विजिबल एंटिटी, राइट? फेसबुक पे आप दो तरीके की एंटिटीज बनाते हैं, एक हो गया आपका बिजनेस पेज और एक हो गया आपका फेसबुक ग्रुप। जो ग्रुप है वो प्राइमरली आप क्रिएट करते हैं तब व्हेन यू वांट कि सेम थॉट प्रोसेस के लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेज करते रहें, राइट? आपने ग्रुप में जैसे yeah, so यहाँ पे there are so many people, right, and everybody will have a specific common aim to fulfill। तो जब हम फेसबुक पर भी ग्रुप बनाते हैं तो वहां पे एक रूल्स होते हैं, वहां के एम्स होते हैं कि यहाँ पर अगर 100 200 1000 जन है वो एक ही गोल के टुवर्ड्स वर्क कर रहे हैं, राइट? तो वो एंगेजमेंट बिट हो जाता है, और जो फेसबुक पेज है वो हमारा टॉप ऑफ द फनल, यानी टू ब्रिंग इन मोर पीपल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे टीएचटी क्या है, राइट? उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फेसबुक पेज बनाते हैं, राइट? सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू द एग्जैक्ट प्रोसेस। नाउ इस केस में दिस पेज would be created by let's say either Loveleen ma'am or somebody that you're assigning, तो उनके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए। Just like I cannot create a bank account without Aadhaar card or without PAN card, I cannot create a Facebook page without already existing Facebook profile। तो अब वो फेसबुक प्रोफाइल से अगर आप फेसबुक पेज बनाते हैं, दैट डज नॉट मीन दैट अदर पीपल हु आर ऑलरेडी योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक और न्यू पीपल हु विल बी ज्वाइनिंग, दे विल नॉट गेट एनी डायरेक्ट रेफरेंस और इन्फॉर्मेशन कि अच्छा ये निशांत ने बनाया है नया पेज या वो मैनेज कर रहे हैं। All right, it will still be focused as the brand। So I'll just share my screen and show you all the things which are essential। Ideally it's very straightforward। जो पहला पेज बनाना है वो बहुत सिंपल, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज टू इट, एनीबडी वुड बी एबल टू क्रिएट इट वेरी क्विकली। बट उस पेज के अंदर के जो फीचर्स हैं, अब फेसबुक ने काफी सारी चीजें में बदलाव ला दिया है, राइट? अर्लियर इट यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नाउ फेसबुक हैज एडेड अ लॉट ऑफ फीचर्स, देयर समथिंग कॉल्ड मेटा बिजनेस सुite, देयर इज कैलेंडर्स, देयर इज planners, there's a lot of things that have come up now, which is what we will see कि आप उनको कैसे यूज करते हैं एंड उनको सही तरीके से आपको यूज करना कैसे, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू लॉग इन टू योर फेसबुक प्रोफाइल, जो आपकी नॉर्मल पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल होगी। सो समबडी वन ऑफ यू फ्रॉम द टीम who is going to be taking the responsibility of creating the Facebook page, they will have to log into their personal Facebook profile first। प्लीज ऐसा बिल्कुल ये मत करिएगा कि आप एक नई Facebook प्रोफाइल बना रहे हैं और उस पर्सनल Facebook प्रोफाइल का नाम आप THT के नाम से रख रहे हैं, राइट? इट हैज टू बी, फेसबुक शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कोई एक्चुअल ह्यूमन बीइंग है जो ये पेज बना रहा है, अदरवाइज बाद में पेज ब्लॉक हो जाता है, बैन हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू फर्निश और शोकेस योर आइडेंटिटी प्रूफ, right? So We'll use my account, Priyesh. all right, perfect। So in that case what we would have to be doing is, जब आप जा रहे हैं यहाँ पे you'll find an option, this menu option, you click on that menu option and then you will be able to click on this option that says page। Let's do that। The very first thing that it is going to be asking you, जो बहुत basic चीजें आपसे मांगी जाएंगी, वो होगी पेज का नाम, कैटेगरी और बायो, राइट? पेज का नाम ऑफ कोर्स इन आवर केस इज नाउ You just have to wait for his internet to catch up. Yeah, I'm checking. I'm calling him parallelly. hello, Priyesh, we lost you in between. can you hear me? Yeah. Yeah, I don't know now what's we happening. can.
I think I need to I think switch there's you. a lag basically. If you can just turn off your video, it might Yeah, help. I'll do that. I'll turn off the video, and I'm just let me know if you guys are still able to see the YouTube live at your end. Sure, just let me check. Oh, right, Shalini, you've already created that page. Yes, we can see YouTube live. Yeah, it's all right. I'm just Yes. gonna switch off my video, although the speed is saying 100 Mbps. I'm not sure what's wrong with today. Uh, Sorry about that. All right, cool. So, ma'am, you're saying that you have already created a page? Yeah, Shalini had started it up because when we wanted Dr. Raveen, if it is already even created, right, the rights can be transferred back to you. Okay. Facebook has that feature. You can take that access, but nevertheless, Actually, what happened? We created the tribal a basic Gmail ID. From there, the accounts were already made, so that nobody can take it. So the page is already. okay, cool, no worries. So you might have just created the base of it कि नाम डाल दिया, category डाल दिया, and bio डाल दिया, right? So nevertheless, one thing that you should be doing, for example, THT या the healthy tribe आपने लिखा, उसके आगे if you can write in one single line wherein you can add some sort of a keyword, right? For example, it could be the health community, right? Why so? Because although not a lot of people go on Facebook and search, Facebook पे जाके हम कोई specifically search नहीं करते हैं, लेकिन if at all there are people who are searching for health, or they are searching for topics related to community or healthy lifestyle, right? It could be the healthy life community. So some people might be typing or searching for healthy lifestyle. आपका पेज का visibility आसान होना चाहिए, right? Then we go ahead and choose category, that what is this page all about. So again, you might want to be typing health, so you are primarily focused on health and wellness, right? So you'd want to be going for health and wellness. Maybe if you look at detox, that's not going to be coming up. Let's see what else do we have in health. Health and beauty, does that make sense for you guys as well? Is it in sync? We can go with that. Now, why choosing the right category ये क्यों important है? Because Facebook ये signals लेता है, right? For example, Facebook knows what Priyash likes, Facebook knows what Nishant likes, Facebook knows what Mumtaz ma'am goes ahead and like, right? वो उनको कौन सा content अच्छा लगता है. So literally your particular personality के हिसाब से Facebook has all the signals कि इनको अगर मैं हेल्थ एंड ब्यूटी में इनको इंटरेस्ट है तो मैं हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड पेजेस और कंटेंट दिखाऊंगा. तो अगर मैं यहाँ पर वो सही कैटेगरी चूज करता हूँ तो फेसबुक ऑर्गेनिकली मुझे सही लोगों के सामने पहुंचाने में हेल्पफुल रखता है. दैट्स व्हाई वी हैव टू बी चूजिंग द राइट कैटेगरी. सेम वे व्हाट वी डिड ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे ऑल्दो वी कुड ओनली सिलेक्ट वन कैटेगरी, फेसबुक में आपके पास 3 कैटेगरीज चूज करने का ऑप्शन होता है. आई एम गोइंग विद 2 ओवर हियर, एंड व्हाटएवर बायो दैट यू विल बी डिसाइडिंग अपॉन, जैसे इंस्टाग्राम का बायो जो आप डिसाइड करेंगे, सेम थिंग शुड गो ओवर हियर एज वेल, right? So page name, category, bio, click on create page, and then it is going to be asking you for certain more valid information जो आपके trust को बढ़ा सकता है, right? Such as your website, your phone number, your email address. तो अभी you may not have a website, which is absolutely fine. To build a community, to build a business presence, it's not compulsory कि आपके पास website होनी चाहिए. Although अगर होगी, then it would be advantageous. But for now, you don't need to do that. यहाँ पे definitely you will have to add your phone number. Now, since ma'am, you are primarily based in North America, but your community is going to be based out of India, India. I would Yeah. suggest कि यहाँ पे जो phone number हो, जो address हो, that should be Yeah. यहाँ का. Yeah, definitely. And whenever you are adding a number, it has to be with the country code, right? Just like I'm adding over here. तो आपने email address, phone number यहाँ पे डाल दिया, and the location, address. So again, right now you might not have a very specific office address. If you have it, well and fine. If not, you can only focus on, let's say, the city, your primary community का जो आपका headquarter city है, you'll just add that. Then since we are a community, we don't have any specific business hours. We can say we are always open because people can come
रात के 2 बजे भी दिमाग में खुजली हो रही है that I want to become healthy and they're looking for things, right? So we're just going to say always open over here. Click on next, and then it is going to be asking you to add your logo. It's a profile picture hai, which is what is going to be visible over here will be your logo, right? And your cover photo. The cover photo is something that is going to be shown in the background. Now again your cover photo, a lot of people again क्या होता है वो normal कोई random picture डाल दी, healthy life में तो healthy लोग दिख रहे हैं such and such that, but what you want to be doing is आप Canva पे जाएं, एक cover photo बनाएं which actually talks about one or two benefits of joining the community and contact details of the main person, so that if at all somebody has to reach out to you they can contact you, right? तो अगर मैं profile picture डाल रहा हूँ, let's say for example um probably this, oh, no, not this one. Yeah, for example ये logo हो गया पंकज पनीर भंडार, please ignore that, ये test था, but and I might have a cover photo over here. Let's hope this one. So what did I do? ये एक again the template is from Canva itself, right? ये if you go on Canva and you simply go ahead and type Facebook cover, so if you click on create design Facebook cover, right, you will get exact dimensions क्या होने चाहिए, यहीं पर आपके पास आप click करेंगे and you will get a lot of template options from there, and now because you have your color options and logo options sorted, you can create a cover image with those particular colors itself, right? Everything is going to be coming up in this section. यहाँ पे आपके पास, look at that, all the templates are there, whichever one that you'd want to be utilizing, make use of that. What would be good, because you are focusing on building a community, तो अगर ज्यादा लोग दिखें उसमें, let's say you have a picture of a lot of people in the background and वहां पे आपने बड़ा बड़ा लिखा है the healthy tribe, because we're talking about a tribe as well, so as a positioning statement आप tribe को दिखा रहे हैं, a lot of people working towards a similar goal, right? And you have your name and a very small line of where people can contact or where people can find more information, that's it, right? So again you have plenty of options over here, templates over here, जो भी आपको सही लगता है. Let's see if I can find something related to a community. Yeah, now अब ये for example creative community में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, right? Now instead of having this so many random animated characters, it would be quite nice अगर हमारे पास बहुत सारे लोगों के ग्रुप फोटोज आ जाएं, राइट? या फिर अगर आप जूम पर ही कर रहे हैं, हैव एवरीबॉडी ओपन अप देयर कैमरा, टेक अ स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा एडिट करके वो यहाँ डाल दे, सो दैट इट गिव्स अ वाइब टू पीपल दैट दिस इज ऑल अबाउट people working together towards a particular thing, right? So that is what should be a part of your cover image. Make sense? And I think again I can, you guys can trust Shalini to take that call as well, because वो positioning उस हिसाब से आ जाएगी. But very importantly यहाँ पर एक action button है, right? Which basically means what do you want people to do when they come on your page? क्या आप चाहते हैं कि आपके पेज से वो आपके किसी वेबसाइट पर जाएं, या फिर किसी आपको मैसेज करें ऑन मैसेंजर या इंस्टाग्राम पर जाएं, या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, राइट? सो इफ यू क्लिक ऑन दिस ऐड एक्शन बटन, you'll find these plenty of options. Book now, which is not relevant for you. Sign up, start order अगर आप कोई restaurant run कर रहे हैं, or if you are selling products from your website or some from other section, right? तो आप कर सकते हैं view shop or get a link from where they can find out all the products. But for now, what would be very good for you to begin with would be send WhatsApp message, right? Yes, as SN Toker sir is saying, it could be a Google form as well. तो अगर आपको Google form रखना है, then it would be as simple as learn more. ये learn more option पे आप choose करें, and वो जो Google form का link होगा यहाँ पर, वो अभी आ नहीं रहा है कुछ, आप जो आपका स्क्रीन आई थिंक हैंग है. is my screen visible, everybody? The screen is visible, but the other part Yes, you were talking about, Google form and all, it is not coming. हाँ, So अभी मैं add Google form a, पे गए. Are you able to see add action button, ये learn more वाला, everybody?
Yes. Yes. Yes, it's clear. क्लियर? मनोज सर एक बार आप अपने एंड पे भी देख लीजिएगा है? अभी learn more, I think let's cover it. ठीक है. So once again, add action button और learn more यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, link your group or app. मे बी अगर आपका जो हम Facebook ग्रुप बनाएंगे, राइट, उसका भी आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, दैट जॉइन दिस ग्रुप। और एज सर इज सेइंग कि हमारे पास अगर कोई गूगल फॉर्म लिंक है, लेट मी सी इफ आई हैव एनी पुराना कोई गूगल फॉर्म लिंक that I can just add for a very quick aspect. This form. If you have yours, you can share that right now as well. But chalo, ठीक है, I'm getting something that I'll just randomly put so that you'll be able to see कि जब आप उस पे click करते हैं, it will automatically come up as a Google form. ये मैं ले लेता हूँ. Send. Right. So you can go ahead and put up the link of your Google form over here. ये कर लिया, save. राइट, तो एक्शन बटन इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट लोगों को क्लियरली पता हो, या अगर उनको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कहां से ले पाए. Then when you click on next, it is going to be asking you for another very important input, which would be, do you want to link your Facebook page with a WhatsApp business number? See that, connect WhatsApp to your page. So हम WhatsApp business के बारे में तो आगे चल के बात करेंगे in our one of our sessions, but this is something that you should do. बिकॉज दिस विल एनेबल एन ऑप्शन कि लोग आप जो पोस्ट डालेंगे ना वहां से भी दे कैन सिलेक्ट, ओके दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, आई कैन क्लिक ऑन व्हाट्सएप एंड डायरेक्टली स्टार्ट चैटिंग विद लेट्स से द हेड ऑफ द कम्युनिटी, or directly start chatting with the they can become a part of a WhatsApp group or WhatsApp community itself, right? For example, I'm just going to be adding my WhatsApp number for now and you will see how this makes sense and ये कैसे helpful रहेगा. The moment I add a number, in your case, you will be adding the phone number of a WhatsApp business account, okay, which will be held by either probably primarily with your side, lovely ma'am, right? Ki, whatever business account that you're going to be utilizing in that case. So get code, and I'm going to be getting a code right now. Yeah, which is 45871. Perfect. Right, so click on next. तो ये आपका WhatsApp लिंक हो गया. अभी आपसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू इनवाइट योर एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स? नाउ सिंस यू आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग फ्रॉम योर अकाउंट लवली मैम, इट विल शो ऑल ऑफ योर एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स, और क्या आप उनको सेंड रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं. आई विल जस्ट लीव दैट एंड यू आल्सो डोंट नीड टू डू इट. जस्ट सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन डन, एंड द बेसिक page layout has been created. Your page is now active. The same thing you guys would have to be doing for THT. आप अपने पेज को भी इसी तरीके से लाइव करेंगे. Once you make it live, यहाँ पर भी जैसे if you remember Instagram पे we had a professional dashboard. Same way, Facebook also has a professional dashboard. You have insights. Again, but you're not looking at ads, but you could create ads from here. And then there is something very important called Meta Business Suite. Your time primarily will be spent on professional dashboards, insights, and Meta Business Suite. Okay. Now, do let me know if there's any question, or should I proceed from here? Okay. Yeah, we're good for now until we do it. Yeah. So once you have set up this much, यहाँ तक आप आ गए, आप जाएंगे सबसे पहले जो काम करना है, go to professional dashboard and you will find over here an option called linked accounts, right? So go to linked accounts. We have already linked our WhatsApp. यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि इस Facebook पेज से WhatsApp linked हो गया है. I would have to go ahead and link my Instagram account. तो जो हमारा community का Instagram page होगा, that needs to get synced over here. Why? Because I would want to come to a situation जहां पर let's say all the content creators are creating content and passing it over to Loveleen ma'am, and then Loveleen ma'am, without having to go on Instagram and Facebook on daily basis, वो महीने में एक दिन designate कर सकते हैं that on such and such day I am going to be scheduling
my posts both on Facebook and Instagram from a single page. You will not have to go individually on both the platforms, रील schedule करने के लिए या फिर स्टोरी schedule करने के लिए या पोस्ट schedule करने के लिए, सारी चीजें यही Facebook पेज से ही हो जाएंगी, provided you have linked your Instagram account. So all you'll have to do is Instagram पे select करके you'll click on connect account, and यहाँ पे then it is going to be asking for your Instagram account का login ID and password, right? So whatever login ID and password you might be having, you will enter it, login करेंगे, your Instagram account will get synced with your Facebook page, right? So that is very important. अगर आप लिंक कर देते हैं तो न केवल आप अपना कंटेंट शेड्यूल कर पाएंगे, पर एट द सेम टाइम जो हमें इनसाइट्स इंस्टाग्राम पर दिख रही थी एप्लीकेशन में, वो सेम इनसाइट्स एक ही जगह से आपको फेसबुक पेज की भी इनसाइट्स दिखेंगी, इंस्टाग्राम की भी दिखेंगी। तो मैनेजमेंट जो है बहुत आसान हो जाएगा, राइट? इंस्टाग्राम फिर एक बस एक फ्रंट सेंटर बन जाएगा कि चीजें वहां पे जाती जा रही हैं, पूरा जो डिसीजन मेकिंग करनी है, कंटेंट को स्केड्यूल करना है, एवरीथिंग विल हैपन फ्रॉम योर फेसबुक पेज इटसेल्फ, राइट? सो दैट इज द मोमेंट यू क्रिएट अ पेज, रिमेंबर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाके बिना भूले हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट उसके साथ लिंक करते हैं, राइट? नाउ इसके अलावा दिस इज योर फर्स्ट एस्पेक्ट, आपने इंस्टाग्राम को लिंक कर दिया। Second thing that you need to be doing is go on Meta Business Suite. यहाँ पे there's an option that says Meta Business Suite. Click on it. And now a very good option can come up. Again, let me show you a different page for now before we take that activity further. Yeah. Let's say, for example, I'm managing. Piyush, Yes. Yes, sir. can I add something? Yeah, please. इसमें बेसिकली मैं वर्क कर रहा हूँ, तो इसमें एक चीज का बस प्रॉब्लम रहता है कि जब रील हम लोग इसमें ना शेड्यूल करते हैं, लाइक मेटा बिजनेस से जब हम रील शेड्यूल करते हैं खाली तो वो फेसबुक पे जाती फेसबुक होगी पे होती है। रील, हाँ। हाँ, इंस्टाग्राम वाले पे हमें मतलब पर्सनली डालना होता है, वो कंटेंट हम रख सकते हैं, बस वो चीज होता है। एग्जैक्टली तो वो फेस यहाँ पे जो स्केड्यूलर होगा रील के लिए वो फेसबुक का ही होगा, इंस्टाग्राम पे हम एक्चुअली जाके बनाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेज दैट आई एम मैनेजिंग, और इनके अगर मैं मेटा बिजनेस स्वीट पे जाऊं, राइट, तो मुझे, और मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम इनका लिंक करा हुआ है, तो फिर अगर मैं इनबॉक्स पे जाऊं, यहाँ पे द मोमेंट यू क्लिक ऑन मेटा बिजनेस स्वीट यू विल बी एबल टू फाइंड एन ऑप्शन दैट सेज इनबॉक्स, क्लिक ऑन इट। अब यहीं पर यू विल बी एबल टू सी कि आपको फेसबुक पर कितने लोगों ने मैसेज किया, राइट? सी ऑल मैसेजेस, इट्स गोइंग टू शो यू ऑल मैसेजेस, इज एनीबडी अवेलेबल टू चैट, ये हमारा इंस्टाग्राम पर आया था, मैसेंजर पर आया था, सी ऊपर मैसेंजर भी लिखा हुआ है, that means the messages that you've received on Facebook particularly, then यहाँ Instagram पर भी लिखा हुआ है, that means you will be able to see all the messages that have come on Instagram. Then you have Facebook comments, you will be able to see what all things people have messaged or typed as a comment on Facebook, and you have Instagram comments as well, so you will be able to see कि अगर किसी भी post पर किसी ने मैसेज किया हुआ है या कमेंट किया हुआ है, you will be able to reply to them from here itself. Again, आपको you will, what can be done if Loveleen ma'am is, for example, having the access of both these profiles, but she is not able to respond to people immediately, तो हम इस पेज पर certain admin access दे पाएंगे couple of लोगों को, and those people will be able to manage, right? इसी पेज पर I can add an employee access or an admin access or a moderator access to different people, कि कुछ लोग कंटेंट अपलोड भी कर सकते हैं, कुछ लोग केवल कमेंट्स को मॉडरेट करेंगे या रिस्पॉन्सेस देंगे, और कुछ लोग केवल एनालिटिक्स देखेंगे। सो आई कैन हैव दीज 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस एज वेल। एंड ये कब हुआ? जब हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया हुआ। Now again, if I have connected both of them, what else I will be able to see? If I go on professional dashboard and ये insights हैं, if I click on home, right, तो मुझे यहाँ पर ये Facebook पेज भी insights नजर आएंगे, right, आपके Instagram पेज के भी insights नजर आएंगे, everything in one consolidated aspect,
right? You will not have to go here and there to see Instagram पे क्या चल रहा है, Facebook पे क्या चल रहा है, right? Look at that. See that? Your results, 96 page reach from Facebook, from Instagram 373, right? तो Instagram पे last week में क्या हुआ, Facebook पर क्या हुआ? Instagram reach is showing much higher as compared to that of Facebook page reach, and this will always be there. Specifically जिस target audience को आप लोग focus कर रहे हैं, वहां पे Instagram reach आपको ज्यादा मिलेगी. Facebook page हम primarily इसलिए create कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से चीजों को manage कर पाए, right? So that is the benefit of having your Facebook and Instagram linked together. Not only will you be able to post things, but you will also be able to see combined analytics कि क्या चीज work कर रही है, क्या चीज work नहीं कर रही है. Okay, any questions before I move forward? Right. So आपने पेज बना लिया, आपने गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया, व्हाट्सएप को लिंक कर दिया, इंस्टाग्राम को लिंक कर लिया, एंड देख लिया कि मैसेजेस कहां पर आ रहे हैं और इनसाइट्स कहां मिलती हैं. नाउ देयर इज वन अनदर वेरी गुड ऑप्शन दैट यू कैन ऐड, एंड एज आई वाज सेइंग, आपके जो टारगेट ऑडियंस है, दे कैन कम ऑन योर फेसबुक पेज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सुबह दोपहर शाम कभी भी आ सकते हैं, एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी कमिंग अप विद सर्टेन क्वेश्चंस इन देयर माइंड, राइट? अगर आप उन क्वेश्चंस का सही टाइम पे इंस्टेंटेनियस आंसर दे देते हैं, then they are much more likely to interact with you. They are much more likely to trust with you. Just like you go to any shopkeeper जो कपड़ा बेच रहा है, right? He would know कि मेरे पास आने वाले लोगों के most frequently asked questions क्या होंगे. They're always going to be asking about the quality. They're always going to be asking about price. They're always going to be asking about certain discounts, offers, whatever, right? अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो आप हमेशा पूछेंगे कि इसकी माइलेज कितनी है, इसकी वारंटी कितनी है, इसकी गारंटी कितनी है, and so on and so forth. और जितना अच्छी तरीके से वो सेल्स पर्सन उसको रिस्पॉन्ड करता है, उतना ज्यादा आप उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं. So every business is having certain frequently asked questions, and 7 to 8 out of 10 people जिनके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, they will always have a couple of questions जो आपको लगेगा कि अच्छा उसने भी यही क्वेश्चन पूछा था, इसने भी यही क्वेश्चन पूछा है, उसने भी यही क्वेश्चन पूछा है. You'll always find that majority of the people think from the same perspective. तो हम ये चाहते हैं कि मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर वी आर एबल टू सेट अप सर्टेन ऑटोमेशन कि जैसे ही कोई मैसेंजर पे क्लिक करता है या मैसेज पर क्लिक करता है, दे शुड बी एबल टू सी दैट आई कैन आस्क 4 to 5 डिफरेंट क्वेश्चंस. जैसे ही वो किसी क्वेश्चन को क्लिक करे, उनको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाए. And that also is being done from your Meta Business Suite itself. So let us just go back to that page that we were creating. Which one is here? So I'll go to, अगर मुझे automation setup करना है, I'll go to Meta Business Suite once again, and Meta Business Suite में I'll go to inbox, and from within inbox, यहाँ ऊपर अगर आप देखें, all of you guys will be able to see this option that says automations. So let's click on automations. Now what kind of automations can you create? Instant reply. जैसे ही किसी ने हाय लिखा, हेलो लिखा, and you want कि unattended ना जाए उसका मैसेज, you are saying instantly एक चला जाए, hi Priyash, thank you so much for messaging us, we will get back to you with your answers, etc. Or somebody from our team will instantly call you, can you please respond back with your name and phone number. आप ये भी कर सकते हैं. कोई रैंडम विजिटर आया, उसने हेलो लिखा, आई वांट टू नो मोर, एंड यू आर सेइंग कि इंस्टेंटली विदाउट यू इवन टाइपिंग एक आंसर चला जाए, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग टीएचटी, somebody from our team will get in touch with you, could you please respond back with your name, phone number and location. That could be an instant reply. For example, अगर हम इसको बनाना चाहें, try it, and on messenger, and look at that, ये एक डिफॉल्ट मैसेज आ गया, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच. व्हाट आई विल डू इज, इंस्टेड ऑफ दैट हाय, एंड आई वांट कि जो भी मुझे मैसेज कर रहा है उसको डियर सर स्लैश मैडम ना जाए, राइट? It's not a generic salutation that we want. We want, if
Manoj sir has messaged, so it should go hi Manoj. If Priyash has messaged, it should go hi Priyash. I want that level of personalization. So यहाँ पर if you see this option comes up that says personalize your message. Click on it. First name, add. So it is going to be coming up like that. And you can simply type, thank you for reaching out to us. We will help you with your concerns. Could you please share your contact details, um, and we will connect with you. Right? Thanks, team THT. Or um, thanks, the healthy tribe. Right? So that's how people are going to be getting a message. So I can save that. That is one automation that you should be having. दूसरा automation that you should be having should be your frequently asked questions. Frequently asked questions would mean वो कौन से 3 से 4 ऐसे questions हैं जो लोग हमेशा आपसे पूछते रहेंगे. So I want all of you guys to write in the chat कि अगर कोई community join करना चाहेगा या चाहता होगा जिनसे आप मिलते हैं, what kind of questions do you come across जो सबसे ज्यादा लोग पूछते रहते हैं आपसे? Either you can unmute or you can type it in the chat. How to be healthy. Okay. Okay. What else? How to be get weight loss. Right. How to lose weight. Okay. How to be fit and fine. So What think to of eat. it. आपके सामने. Sorry, I'm using something. Just like what to do, what to eat, so which Right. is now as well. But So primarily people come with very specific questions about कि either weight loss or better body, right? Or healthy diet, right? So I can add यहाँ पर एक एक करके. For example, add another question. यहाँ पे आ रहा है question number 1 और उसके आगे हमारे पास ये option है edit का. I'll just click on that and go ahead and type how to lead a healthy life without compromising on food. Does this come up as a question quite commonly to you? Matlab, I don't want to compromise on food, yet I want to lead a healthy life. Right? So what I can do is, यहाँ पर, this is just an example. You guys would know probably better kind of questions that people might be having in their mind. And हम यहाँ पे लिखते हैं, hello, personalization चाहिए मुझे. तो यहाँ पे personalize your message. I'll click on that. First name of recipient. And I can say, leading a healthy life is not difficult, and you don't have to punish yourself by following strict diets. Join our community to get motivated and inspired by thousands of people who have um, achieved health through disciplined approach. Right? For example, ये मैंने आंसर दिया, thanks THT. Right? ये आपका पहला क्वेश्चन, इसका आंसर सेव चेंजेस. सिमिलरली इसी तरीके से आई कैन गो अहेड एंड ऐड अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, व्हिच कुड बी, लेट्स से, हाउ टू लूज वेट. एंड अगेन यू कैन से हेलो. यहाँ पे फर्स्ट नेम आना चाहिए
once again, um, losing weight is all about healthy habits. Follow us, follow our community to get tips to lose weight in a proper way. राइट ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसको भी कर लेते हैं सेव. And similarly, I'm going to go ahead and add one more question. Can you give me another question idea? Anybody? How much time need to get lose weight? Right. How much time does it take to lose weight? अब again, hello. यहाँ पे ये रखना जरूरी है, personalization. So first name, and then you can say losing weight depends on body type, existing diet, and your own discipline. For example, ये लिख दिया मैंने. So that is done. Save changes. Now what I would want you guys to do, if it is possible, I guess all of you guys are on your laptop. मैं आपको ये Facebook page का link देता हूँ. I hope I've done it on the other one. 1 second, guys. Yeah. So if you can search for that particular page on Facebook, this one, that says Priyash Tribe Healthy. I'm just going to share the link. आप इस पर जाइए एक बार अभी, and you will be seeing an option that says message. Right? See what happens. I'll do it from a different profile of mine in the meanwhile. Right. So if I'm going on this page for the first time, you will see यहाँ पर ऊपर एक message का option आएगा. Right? जो मैंने link दिया है उस पे click करके यहाँ message पे click करिए, and then the moment you click on message, एक messenger pop up हो जाएगा, और उस messenger पे आपको ये तीनों questions दिखाई दे रहे होंगे. Please do let me know if you can see all of these 3 questions that we've set up. If you can, click on any one of those questions and see what happens. Right. So it got sent automatically. Automatically, right? So for example, Rakesh ji just asked how much time does it take to lose weight, and then it comes up with a personalization. Hello Rakesh, right? Losing weight depends on body type, etc. Similarly, Lovely ma'am had asked that, and immediately उन्हीं के नाम के साथ the answer is getting sent. So this is what you would want. Or agar, by the way, if you are integrating Instagram with Facebook, this automation will also be visible and available on Instagram. Okay. अगर आप Instagram पर लिंक कर देते हैं तो जो ऑप्शंस, जैसे ही कोई Instagram पे मैसेज पर क्लिक करेगा, they will also get to see these 3 options, these 3 questions that you've put up. The moment they choose any one of these particular options, instantly they are then going to be getting the answers on Instagram as well. That is why this messenger automation is quite good, right? I think we had also put up ये instant reply भी on था. किसी ने directly, if somebody has not clicked on any one of the questions, try writing just a hi or a hello before choosing any one of these questions. Yeah. So since you have already interacted, ma'am, it is not going to be giving you that instant respond. वो पहली बार जब आप when you are talking for the first time without choosing any one of these questions, then आपको वो instant reply मिलता है. So अगर कोई पहली बार जा रहा है और उसने किसी भी इन questions में से किसी को भी choose नहीं किया है, and that guy is simply typing hello, are you there, then वो instant reply जो पहला वाला हमने setup किया था, that could be sent. Okay? ये एक और पेज का सेटअप है जो आपको करना है.
all of this activity that we're doing is primarily so that मेरा पेज और बेहतर तरीके से लोगों के सामने आए, नजर आए, engage दिखाए, एक professional setting दिखे, that there's actually quite a lot of good things that are happening with this community. अगर हम यहाँ जुड़ेंगे तो I can expect good interaction. I can expect now look at this. For example, Shalini had put up just a hi. She did not choose any of the questions. So what happened? Hi Shalini, thank you for reaching out to us. We will help you with your concerns. Could you please share your contact details and we will connect with you. Right? So, but Shalini, are you still able to, by the way, see those 3 questions? Even after this message? Right. So if you refresh it or maybe come back later, तो यहाँ पर Shalini will still be able to see those 3 questions, frequently asked questions, जो उनको choose करके आगे बढ़ सकता है. Now there could be a lot of automations that can happen. I'm not going to be getting up over there because वो काफी ज्यादा technical हो जाता है आगे. But if at all this is exciting any one of you, and you would want कि ऐसा भी कम कर सकते हैं क्या कि अगर कोई पहला वाला क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी, right? The moment that could also, by the way, could be one of your frequently asked questions. How to join the community? What are the next steps? And then moment उसने उस पे click किया, a trigger or a message should go to Loveleen ma'am that somebody is interested, right? So that kind of, those kind of automations can also be done so that your page can become much more professionally looking and managed, right? So this is what you guys need to be doing. Now, for example, I can also get a little bit of information of that person. For example, Honey is messaged me and somebody from my team becomes online. कल परसों मैं online आता हूँ, मैं देख सकता हूँ, अच्छा Honey Khanna Sabharwal has messaged and इनकी जो background है, she's from Delhi, DPS Arkipuram. By the way, Honey, I'm also a dip site, but from DPS Vadodara. But you know, all of these things can be looked at. You can find out a little bit of insights of your customer or of the person before you actually go ahead and message them. Okay. At the same time, I am not sure if anybody tried doing this, but इस पेज पर जो पेज है, अगर आपने learn more पे click करने की कोशिश करोगे, see that, see if you click on learn more, what happens? It's going to take you to a Google form जो हमने link किया था, right? तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने Google form डाला है यहीं पर and people can go to that Google form, or you can ask people कि please click on the learn more button to join the community. Okay, there could be one more thing that you can do. That let me show you that option that I think would also be very relevant for you. If I go ahead in automations and frequently asked questions में ही एक और question डाल देते हैं हम. Add another question. I can say, how do I join this community? Right? And you can say, hello, first name, you can join this community by clicking on the button below. Where is that button? You can also add a button. See, यहाँ पर add media, add button. Click on add button. यहाँ पर आप join us today. And website URL में क्या डालेंगे हम? What do you think? What is it that we'll put up? Our Instagram page or the Google like a form. group? Google form. Oh, so we put the Google form so Yeah. they give us. So from here itself, so if somebody's in fact, you could do that with every message over here. So let's say, for example, I forgot where that form was. Okay, for example, this is that form that I have. I'm just going to be putting it up over every place, right? This is the form. So add to menu, done. So now if people click on that particular message, they will be getting an option. They can see a button. And in fact, agar main bakiyon mein bhi kar deta hu, these all the other questions that we'd added, I can add one call to action, and this is something that you should be doing. Join us today
by clicking on the button below. With every question that you're putting up, with every automation that you're putting up, you should always have a call to action, right? There's a movie that I'd seen a long time back, and specifically because I was working in a sales environment as at the start of my career, तो हम कहते हैं ABC, always be closing, right? That means आपकी कोई भी communication हो रही है, give an option to people. यहां से आप मेरे साथ जुड़े, आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं? आपने एक सवाल का जवाब दिया और फिर बोला आप जुड़ने की कोशिश करिए, right? So everywhere, even the post that you'll be putting up on Facebook, give this option: join us today, join us now to transform your life. Every post, whether it is on Instagram, whether it is on Facebook, reinforce it in their mind that by joining this particular community, their life is going to get revolutionized completely. Okay, any questions? Is this making sense? Are you guys able to understand this? प्लीज आपने जो लिंक भेजा है ना जिसमें अभी व्हाट्सएप उस चैट में, तो वहां पे क्लिक करके आप फेसबुक पे कहाँ पे वो ऑप्शंस मिलेंगे, हाई वाला जो भी हम लोग देख रहे थे, आप उस पेज का जो आपके पास लिंक भेजा, उसी में ऊपर ऑन द टॉप इटसेल्फ यू विल बी एबल टू फाइंड मैसेज करके एक ऑप्शन आएगा. लेट मी सी चैट में कहाँ गया वो पेज. It's right in the middle of the. Right. on Even like if you on any go Facebook through page. your mobile phone पे भी अगर आप उसे क्लिक करते हैं, you'll be able to find message. ये आपको मैसेज यहाँ दिखेगा right on top. right? Can I say hi, right? या if you say hi, या फिर आपको वो चारों questions भी दिख रहे होंगे जो अभी हमने ऐड करे हैं. Wait a minute, मेरे को मिल गया इसमें मैंने. तो the moment I say hi, then आपके पास एक रिस्पॉन्स आएगा. Right, I'll be able to see over here that ये आ गया, जैसे मनोज गुप्ता I was able to see. हाँ, how to lose weight वो आ गया, आपने क्वेश्चन पूछा था. Okay, so this is the automation. Now the other important thing, ये आपका base है. This is just understand that this is your base that you are setting up on your Facebook page, so that जब आपके पास traffic आने लगे, जब आपके पास लोग आने लगे, तो आप उन्हें अच्छी तरीके से nurture कर पाए. Right, this adding FAQs is all about nurturing, right? Putting the right information in front of the right person at the right point of time, ताकि आप उसे लगातार nurture कर पाए, and over a period of time they feel incentivized that they should become a part of this community or buy your products. Now what else you can do on your Facebook page, and something that you will have to be doing on a regular basis, daily basis, and that is content, putting up content in front of people, right? So पुटिंग अप कंटेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर आप केवल फेसबुक पेज पर फोकस करें, यू विल फाइंड ओवर हियर कि आप फोटो, ये जो ऊपर आ रहा है व्हाट्स ऑन योर माइंड, इज बेसिकली पुट अप अ पोस्ट. Now 99.99% times you are either going to be putting a photo or you're going to be putting up a video. So if I have to put up a photo or a video, I'm just going to click over here, done. And जो भी फोटो या वीडियो आपको अपलोड करना है, फॉर एग्जाम्पल अगेन आई हैव समथिंग रैंडम, let's say this, right? And I can simply go ahead, for example, get the best recipe for paneer and become or eat healthy food. I'm just writing it randomly for now, and then I can say join us today, click on the button below to know more. Now यहाँ पर भी एक बटन डाल सकता है, और वो क्या होगा? See, you will find this option. So I've added an image as a post. उसके ऊपर आपने ये लिख दिया, and then there's an option that says add to your post. So when I click on add to your post, I'll get an option that says get WhatsApp messages. Do that, post it. And now I'm adding another one so that you'll get to see कि ये exactly कैसे काम कर रहा है. Let me add another photo or video. If I have, do I have? Let's say this, join our
community to become a better version of yourself, right? And again, add to your post, click on get WhatsApp message, done. Now again, go to the particular page जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. You just refresh this. And see if you can see both of these posts that I just added. आपको दोनों दिख रहे होने चाहिए. Now, under those particular posts, you will be seeing an option that says WhatsApp. So I want some of you click on the Paneer post. Some of you guys click on the DMA post. Let's see what happens. Right. So for example, I got a message from Chetan Sharma ji. मेरे पास WhatsApp पे immediately message आ गया from Chetan Sharma ji, and a lot of people, I mean, it's coming up over here, and I can find out Chetan Sharma ji ने कौन से post पे click किया. So Chetan ji, do confirm if you clicked on special paneer wala post, because Yes. on my WhatsApp I am able to see his number. Let me see if I can open the web version of WhatsApp. And I would like other people to do it as well. See this. ये आ गया हमारे पास, राइट. वेब वर्जन में भी पूरा लोड नहीं हो रहा, बट आई कैन, यहाँ पर जो इनका हेलो आ रहा है ऑन माय मोबाइल फोन स्क्रीन, आई कैन एक्चुअली सी दैट ही क्लिक्ड ऑन स्पेशल पनीर, एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव हिज नंबर, एंड व्हेन आई वुड क्लिक ऑन हिज नंबर आई वुड आल्सो गेट टू सी हिज नेम. ये लीड हो गई आपकी, right? If there is somebody who's coming onto your particular WhatsApp page, right? Let's say for example this one as well. So this is 7806 Shalini, right? And Shalini has basically clicked on DMA wala post. Is that right, Shalini? Yeah. So I would know exactly who has clicked on which post. They're directly coming on to me on WhatsApp. And because they're coming on my WhatsApp, I would know that this individual has come from Facebook looking at my content. And which particular content? I have their number, I have their name. Somebody is going to be calling them or adding them to a Facebook group or somewhere, right? Another one looks like this is Manoj sir. So I have his number, I have his name. He has come directly from Facebook, right? So more and more people are dropping in now. So this is what you would want to be doing. आपके जो भी आप content directly Facebook पर upload कर रहे हैं, ensure that you are able to add this call to action button of WhatsApp. This again is going to be helping you provide a particular environment which could be very easy for you to get traction. राइट अगर आप मान लीजिए दिन में 4-5 पोस्ट डाल रहे हैं और हर किसी पे ये व्हाट्सएप वाला ऑप्शन होगा, देन पीपल विल वेरी इजीली बी एबल टू कनेक्ट विद यू एज वेल, राइट? So Prash, Yes. now comes the practicality. How do we manage the WhatsApp? So ideally what you'd want to be doing is you should be having a WhatsApp business account. Right now what I've connected is a WhatsApp personal account. तो जो WhatsApp business account अगर आप यूज कर रहे हैं, then वहां पर भी if somebody is clicking on this, you know, like WhatsApp पे click किया, they and on WhatsApp also I can set up automation responses. So if somebody says hello, I've seen this on Facebook, right, or I've seen this post on WhatsApp, the moment they go it, वहां पर आ जाएगा, thank you for reaching out to us, somebody from our team will get back to you. Now as a team, you would know that, you know, every day at 5 p.m. or every day at 6 p.m. somebody is looking at how many messages we have had and collating that data, pass it on to the respective people who can take care of them. Or you can also do the other thing, right? Thank you so much for showing interest, right? Here's a link of the form that you can fill to get more information or join us in that ways. Make sense? Yes, I think And that that is would be more practical for us. yes, Yeah. and that is something that you'll have to do it with a particular WhatsApp business account as opposed to with a personal account. Yeah. So Prash, how we can you create the business account? What's the business account?
उसके लिए you'll have to be downloading WhatsApp Business mobile application, and we have a specific particular session which we are going to be focusing purely on WhatsApp Business. I think एक दो हफ्ते के बाद वाला है, and we'll be discussing that in detail. So one more question. I mean, when we click on this, there are three options: share, comment, or message. All the scenario, you will get the information from the user side. आप यहाँ पे अगर WhatsApp, ये जो अगर WhatsApp पे क्लिक करते हैं, डायरेक्टली मेरे पास WhatsApp पे मैसेज आ जाएगा, राइट? इफ यू आर गेटिंग रीडायरेक्टेड टू द WhatsApp screen, be it on your laptop, be it on your WhatsApp, I'm 100% going to be receiving your name and number. Okay. Sir, how Yes. can we make WhatsApp Business download? Sorry. Just 1 second. I think Deepak has been waiting. I'll take his question and come back to you. Yeah, Deepak ji, go ahead. So when I am trying to use that WhatsApp button in from that Facebook, the message which is being coming on my screen looks like you don't have WhatsApp installed on your desktop. Yeah, so अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं ना, बिकॉज अभी आपने क्लिक किया है WhatsApp फ्रॉम योर लैपटॉप, तो लैपटॉप में अगर आपके पास WhatsApp का वेब वर्जन नहीं होगा तो WhatsApp पे वो जा ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो और मोबाइल पे क्या है, मोबाइल पे जाके आप करते हैं तो वहां पे WhatsApp आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो पर्सनल WhatsApp मैसेंजर है, तो वहां से जाएगा। 99% लोग आपके फेसबुक पेज पे कहाँ से आएंगे? वो आएंगे मोबाइल फोन से। मोबाइल, है ना? Got it. Thanks. Perfect. Yes. Who was asking? Shalini. Yeah, go ahead, Shalini. How can we make WhatsApp Business account? As I said to Manoj sir as well, कि you'll have to download a WhatsApp Business Manager account, ठीक है? But we will talk about that in detail later on as well. Okay, sir. Okay. Yes, Archana and Siddharth. Yeah, Priyash, one more thing, like you said, on WhatsApp, it can be connected. And I guess there will be only one number which will be connected with that. Yes. So, and can we create some more users for that? If you'd have to be creating more users for that, उसके लिए हमें एक third party tool use करना पड़ता है. It's called What I करके. This is the one. What I? हाँ, I'm just showing it to you. Is this? ये third party tool है, which you can, let's suppose, take a subscription for, and यहाँ पर एक ही भले ही there could be only one WhatsApp number, but there could be n number of users managing that, right? और इस tool से again आप bulk emails, bulk messages भी कर सकते हैं, groups बना सकते हैं, WhatsApp पर shop बना सकते हैं, a lot of things can be done. But again, I will talk about this in more detail when we talk. We have a specific session scheduled for WhatsApp. Okay. Right. So let's not take any more, guys. Leave the WhatsApp questions for that day. Right. Cool. So what have we seen? Facebook page we've set up, added the brand identity to it. We've added Instagram, उसके साथ link कर दिया. साथ ही साथ हमने मैसेंजर ऑटोमेशन सेटअप कर दिया, एंड ये देख लिया कि कोई भी पोस्ट में अगर फेसबुक पे डाल रहा हूँ तो वहां पे व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाए. अब since there are going to be a lot of people who are going to be creating content, right, and that content is going to be given to one or two different individuals, you don't want to be in a situation कि मैं every day एक fight लगाऊं कि यार मुझे सुबह तक कंटेंट चाहिए, फिर somebody is going and uploading that content on Instagram, then on Facebook, right? That's a lot of work. देखा जाए, that's a lot of man hours to be going. Specifically जब आप दिन में, मैंने कहा था आपसे 3 से 4 बार आपका पोस्ट जाना चाहिए, राइट? तो वो प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपका लगातार फेसबुक पर भी जाता रहे, इंस्टाग्राम पर भी जाता रहे, और प्री प्लान्ड होकर जाए, राइट? ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, प्री प्लान्ड होके आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली हर महीने जाता रहे, उसके लिए हम फेसबुक का एक शेड्यूलर यूज करते हैं, राइट? सो आई विल शो यू हाउ वी गेट टू दैट शेड्यूलर, so that जैसे शालिनी has created an entire content calendar. Ideally what you would want to be doing is हर महीने की शुरुआत में
you should have a content calendar. Let's say right now we are going to be beginning with February. तो by the 20th of January, मेरे पास February month का content calendar should already be planned. कि मुझे पहले ही पता हो कि February में किस तरीके का content बनाऊंगा. 25th या 26th January तक वो जो graphics बनने हैं, जो content बनना है, they should be ready. And by 29th and 30th पूरे February में क्या क्या चीजें पोस्ट होनी है, they should be done and ready and scheduled. Make sense? This is the reverse planning that you will have to do for each month. एक महीने पहले ही आपको पता होना चाहिए कि अगले महीने हम क्या पोस्ट करने वाले हैं, कौन से दिन करने वाले हैं, कितने बजे करने वाले हैं, उसका टॉपिक क्या होगा और उसमें हम किस तरीके के हैशटैग्स यूज करेंगे या कॉपी क्या होगी. That content plan should be there, and in order to schedule it technically, let's see that how it needs to be done. So again, I'll take to another account. Right. So वो जो scheduler option है आपको कहाँ मिलेगा? वो यहाँ मिलेगा Meta Business Suite पे. Again, you'll go on Meta Business Suite. And over here as well, you are going to be getting this option that says Planner. तो आप यहाँ Planner पे जाएंगे. अब प्लानर पे जाने के बाद लुक एट दैट, इस तरीके से आपके पास एक पूरा कैलेंडर तरीके से खुल रहा है. यहाँ पे एवरीथिंग इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ कैलेंडर इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ व्हाट डू वी डू विद दिस कैलेंडर? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑन टॉप अगर आप देखें यहाँ पे आ रहा है क्रिएट का ऑप्शन. राइट हैंड साइड ऑफ द क्रिएट ऑप्शन देयर इज दिस ड्रॉप डाउन बटन. यहाँ पर यू विल बी एबल टू सी क्रिएट पोस्ट, क्रिएट स्टोरी, क्रिएट रील, गो लाइव. Now create reel अगर आप कर रहे हैं यहाँ से, then that is primarily for Facebook. Instagram की reel Instagram application से ही बननी चाहिए, वहीं से schedule होनी चाहिए. Live जाना चाह रहे हैं, again this is going to be for Facebook. But ये जो post और story है, ये आप Facebook as well as Instagram पे एक साथ upload कर सकते हैं. So I'm going to click on create post and then check this out. जैसे ही मैंने post पे click किया, see यहाँ पर post 2 में it's showcasing Facebook icon. That means if I continue with this right now, whatever post that I'm going to be creating right now will only get posted on Facebook. If I click on the drop down, I will also see the Instagram account. I want कि जो मेरा content है वो Facebook पर भी जाए और Instagram पर भी जाए, तो मैं Instagram को भी यहाँ से select कर लूंगा. Right? So I'm now sure that whatever that I'm going to be adding will get posted on both Instagram as well as Facebook. अब मुझे कोई photo share करनी है, all I'll do is click on this photo, add photo, whatever image that you would want to be promoting. For example, let's say this one, right? For example, this is the photo. Now this is how it is going to be going on Facebook. यहाँ देखिए Facebook news feed preview दिखा रहा है, and this is how it is going to be looking like on Instagram. So I can see that how it is going to be going on looking at on Instagram, how is it going to be looking and seeing on Facebook. ये desktop में ऐसे नजर आएगा. If I look at mobile phone, then it is going to be looking like this on the mobile phone. So I can get to see that exact preview that how it is going to be going on both Facebook as well as on Instagram. आपको बस यहाँ पर अब केवल text लिखना है. Eat fit, get fit, for example. तो वो ऊपर लिखा हुआ वो जो भी copy आप लिखेंगे, that is going to be coming up over there. Right? Now scheduling options में भी you have this. If I click on publish now, तो ये instantly अभी के अभी Facebook पर भी चला जाएगा, Instagram पर भी चला जाएगा. If I choose publish now, instantly it will go on both Facebook as well as that on Instagram. If I choose schedule, then I can select that Facebook पर this should go on 20th January at 8 p.m. Instagram पर भी I want this should go on 28th January at 8 p.m.
या फिर there's one more very good thing. There's an option that says active times. I click on active times. ये मुझे बताता है depending upon my past data, depending upon my follower count, Facebook and Instagram will tell me when is the best time for you to post. Depending upon when will you get the most traction from your followers. अब जैसे 25 तारीख को विच इज टुडे फेसबुक पर मुझे आइडियली 8:30 बजे पोस्ट करना चाहिए, राइट? 26 को भी एट 8:30 बजे एंड 27 को भी 8:30 बजे। फेसबुक को ये ऑन फेसबुक इट्स सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू पोस्ट। बट लुक एट इंस्टाग्राम, for 26 January it is showing me that the best time to post my content is 9:30. On 27 January the best time for me to post would be 8:30, and then on 1st February it should be 4:30. You see the difference? That is because Facebook knows कि जो मेरे followers हैं या जिन लोगों तक मुझे पहुंचना है वो दिन के कौन से टाइम पे there are higher chances that they are going to be active, and there are higher chances that I am going to be getting certain kind of traction. राइट? आपको क्या चाहिए? ज्यादा लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स। तो अगर हम लाइक, शेयर्स, कमेंट्स के लिए अपना कंटेंट तब पोस्ट करें जब टारगेट ऑडियंस लाइव होगी, ऑनलाइन होगी, तब जाके मुझे ज्यादा फायदा होगा। आ रही बात समझ एवरीबॉडी? सो ये एक्टिव टाइम जो दिया है प्रवेश, इसमें से ऑटोमेटिकली जब हम ये ऑप्शन ले लेंगे तो उसी टाइम ये पोस्ट कर देगा। एग्जैक्टली। अभी अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 26 जनवरी 8:30 फॉर फेसबुक एंड 26 जनवरी 9:30 फॉर इंस्टाग्राम, ये मैंने सेव किया, तो ये ऑटोमेटिकली, और जैसे ही मैं स्केड्यूल पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली 26 जनवरी 8:30 को ये पोस्ट फेसबुक पे चला जाएगा, 9:30 बजे 26 जनवरी को ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे चला जाएगा। और ठीक इसी तरीके से आप अपने ब्रांड के जितने भी फ्यूचर कंटेंट हैं, फेब्रुअरी का कंटेंट, मार्च का कंटेंट, मई का कंटेंट, इस तरीके से एक एक महीने पहले ही आप बना के स्केड्यूल कर देंगे, ताकि जब वो महीना चल रहा है, right? For example, I am in February right now. I do not have to worry about what is getting posted. जो basic content है वो जाता जा रहा है. Then strategically I can focus more on getting testimonials or focus more on creating reels for Instagram. ट्रेंड में जो चल रहा होगा उसके बेसिस पर मैं रील क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा। आई विल नॉट हैव टू फोकस ऑन कि अरे स्टोरी जा रही है कि नहीं जा रही है, पोस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो डेली की मगजमारी जिसे आप कह लो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर कंसर्न व्हाटसोएवर। योर ओनली कंसर्न विल बी लुकिंग एट नया ट्रेंड क्या चल रहा है, नई रील क्या डालनी चाहिए, किसी का टेस्टिमोनियल लेना है कि नहीं, या ग्रुप में या अपने फेसबुक पेज पर ऐसे कौन से नए इंसेंटिव्स डालें या नए चीजों को हम यहाँ पे प्रमोट करें ताकि पीपल बिकम मोर एक्टिव। दैट इज व्हाट योर फोकस शुड बी। ओके, any questions? Right, so you can add photo, you can add video. So by the way, you can also create a video from image. अगर आपके पास एक सिंगल इमेज है या 2-3 अलग अलग इमेजेस हैं, आप उनको एक वीडियो में मर्ज कर सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल ओवर हियर क्रिएट वीडियो फ्रॉम इमेज को अगर मैं सिलेक्ट करूं, इट विल शो मी, यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ कपल ऑफ इमेजेस। लेट्स से वही जो इमेज थी हमारे पास, आई विल जस्ट अपलोड दैट वेरी क्विकली। राइट, सो आई हैव दिस पर्टिकुलर इमेज। अब मैं चाहता हूं इस इमेज को इनमें से किसी एक फॉर्मेट में यूज कर लूं, फॉर एग्जांपल दिस। नेक्स्ट, so this image has now gotten converted into a 6-second video now, quite literally, right? Look at that. This is coming as हेडलाइन पॉपअप हो रही है, लोगो पॉपअप हो रहा है, कॉल टू एक्शन पॉपअप हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा और देखें जो पहले वाला था टेम्पलेट, let's do that one. Upload image. Yeah, check this out, right? All I'll have to do is
ये इमेज ये रही फॉर एग्जांपल हेडलाइन, ये चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर को हम कर देते हैं व्हाटएवर वुड बी रिलेटेड टू योर ब्रांड फॉर एग्जांपल, राइट। लेट्स से दिस टेक्स्ट ओवरले जो हेडलाइन लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं हम जॉइन अस टू गेट मोर सच join us. I'll just do that. Font change करना है, font change कर लीजिए whatever that you want, right? Done. लोगो आप अपना बदल दीजिएगा, लोगो के भी बैकग्राउंड कलर में व्हाइट की जगह आपको कोई और कलर चाहिए, यू कैन चेंज दैट एज पर योर नीड। एड योर ओन लोगो, यहाँ पर आप अपलोड कर लीजिए whatever logo that you might be having, right? So then it will become a very quick short video for you to add on in Facebook as well as Instagram. See that 10 सेकंड का वीडियो बन गया from a single image, a very quick video that you can go ahead and upload both on Instagram as well as Facebook. And this is the kind of post that you should be doing quite often. जितना ज्यादा आप ऐसे वाले पोस्ट डालेंगे जो 5-6 सेकंड 10 सेकंड के अंदर अंदर के पोस्ट होंगे, you are going to be getting higher reach, more engagement. Remember that, guys. Okay, that's really going to be beneficial. That's really going to be you know, good way of generating traction, right? एंड इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है which इसका मतलब मैंने पहले से कंटेंट रेडी कर लिया अपनी पोस्ट के फॉर्म में और उसको मैं यहाँ से ऑप्शन क्रिएट कर दूंगा वीडियो में एग्जैक्टली शेड्यूल कर दूंगा एग्जैक्टली राइट। अब यू हैव अनदर ऑप्शन ओवर हियर, हमने ऐड फोटो का ऑप्शन था, फिर उसके बाद ऐड वीडियो का ऑप्शन था, एंड देन देयर इज यूज टेम्पलेट। फेसबुक भी आपको अलग अलग टेम्पलेट्स दे सकता है यहाँ पे, राइट? यू विल चेक दिस आउट, Vimeo के डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं यहाँ, फेसबुक वीडियो एड टेम्पलेट्स, लुक एट दैट, दे आर सच गुड लुकिंग टेम्पलेट्स जो आप यहाँ से ही ले सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये फेसबुक के लिए आपको रील्स एंड स्टोरीज के लिए चाहिए तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन। all you will have to do is edit few things, so there is literally no excuse to not put up any kind of content. सब कुछ यहाँ पर है ही, यहाँ नहीं है तो लूमेन 5 में है, लूमेन 5 नहीं तो कैनवा पे है, राइट? कवर वीडियो बनाना है आपको, you'll get to see that over here, right? You want something related to Instagram, Instagram के लिए आपको कोई कंटेंट बनाना है, ये look at that, वीडियो कंटेंट टेम्पलेट्स यहाँ बन जाते हैं, राइट? कॉर्पोरेट पर्सनल, look at that, फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड कुछ बनाना है, a lot of your content will also focus on recipes मेरे ख्याल में, तो आपने ये देखिए ये रेसिपीज का टेम्पलेट आ गया, राइट? अब इसको आप हूबहू ले भी सकते हैं, यहाँ पे बेरीज हैं, ये पूरा का पूरा एक टेम्पलेट चल रहा है, एंड आई थिंक दिस कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स सी अगर मुझे इसका इस तरीके से बनाना है, या लुक एट दैट फिटनेस, इफ आई चूज फिटनेस 5-minute होम वर्कआउट वीकली, right? You have ready-made templates over here that you can start utilizing. If you look at health and wellness, which is what you guys are focusing on, right? It's easy being green, give the body the love it deserves with, let's say, THT for example, right? So there are such nice templates within Facebook itself, yahi se hi, that you can literally drag, drop, choose whatever that you'd want, right? Is this making sense, guys? Interesting. This should make your life very easy, I hope. इसमें कोई कंसर्न तो नहीं है, मींस आप पेड वाला जैसे रहता है या फिर See that यहाँ पे हमने क्या चूज किया हुआ है? Free templates. I can also type over here, let's say recipe, मैंने टाइप किया फ्री में, ये सारे रेसिपीज वाले, ये रील्स या फिर स्टोरीज के ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास, ये 1:1 के ऑप्शन आ गए, 10 रेसिपीज फॉर वीकडे डिनर्स, सच नाइस बैकग्राउंड चल रहा है पीछे, लेट्स से यही वाली बनानी है मुझे, कस्टमाइज, राइट? आई विल जस्ट लॉग इन वेरी क्विकली. Sir, we can make video also, na? हाँ, so over here
when you were looking at all of those templates, वहाँ पे these are all video templates itself. Okay. Okay, sir. I'm already logged in this with some different account, but it's very straightforward. आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, ये जितने भी आपके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं टेम्पलेट्स, you will then be able to utilize it, right? And once you have been able to utilize it, आपके बहुत good looking, if you look at those particular templates, आधे टाइम हम सोचते रहते हैं, when we look at Instagram of other creators of other communities and we see such videos, we realize, ऐसा लगता है कि यार ये कैसे बना रहे होंगे, या ये कहाँ से आ रहा होगा, right? But when you look at the back end, सारा का सारा चीजें फेसबुक इंस्टाग्राम ने आपको प्लेटर में दे के रखा है. इट्स जस्ट वी हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू फाइंड आउट दीज ऑप्शंस एंड मेक यूज ऑफ देम फॉर आवर ओन बेनिफिट, राइट? सो दैट वाज योर पोस्ट. इन द सेम वे, ये तो हमारे पोस्ट हो गए. In the same way, you also have the option to schedule your you could say stories, राइट? स्टोरीज भी अगर आपको याद होगा, टाइम टेबल मैंने आपको बताया था, दिन में 5 से 8 नैरेटिव्स जाने चाहिए. अब आप लोग 5-6 जाने हैं, हर किसी के दिमाग में नहीं आएगा कि यार अब क्या स्टोरी डालनी है, नहीं डालनी है. सो यू कैन प्री प्लान. अगर मंडेज मोटिवेशनल मंडेज, तो उस मंडे में 5 स्टोरीज जानी चाहिए ऑफ 5 people from your community before and after doing things that they have been able to do. So you can simply click on this drop down, click on create story, and यहाँ से आप मीडिया डाल दीजिए and you will be able to edit your particular stories over here as well. So let's say again choosing one particular image, automatically वो image आ जाएगी 9:16 format में, आप उसको डाल पाएंगे. You can add text to your stories, you can add stickers, you can add swipe up link, right? For example, text में मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पर add text and whichever font that you'd want, and text कहाँ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए टॉप पर, right over here, and I can say join our community, for example. ये आपने डाल दिया. Want to expand the size, इस तरीके से आ गया. And I want to add some more text somewhere, दोबारा add text पे क्लिक किया, यहाँ पे swipe up to know more, इसको भी हमने डाल दिया यहाँ पे. Now where is that swipe up? I can add this swipe up link यहाँ पे, and when I add that swipe up link, that would basically mean, we'll just see that once right now. Yeah, अपने फॉर्म का, गूगल फॉर्म का लिंक आप यहाँ पे डाल दीजिए, and that will start appearing on your story. It will not get completely copied and pasted as a big link. It will come up as swipe up. The moment, see that ये see more आ गया है यहाँ पर. The moment somebody clicks on see more, they will get redirected to your Google form. So on your story as well, you can add link. अब see ऊपर ये join our community, swipe up to know more, नीचे see more का option है, click किया, and they will be able to go ahead and look at what is it that you're selling or what is it that you're talking about. You can add text, you can add stickers. आपको stickers add करना है, यहाँ पे ढेरों stickers आपको मिल जाएंगे, whatever kind of stickers that you'd want to be having, right? For example, I want this, यहाँ बीचों बीच में I can add a sticker over there, just to make my story look a little bit more creative, little bit more visual. And let's say I've added it over here, and again यहाँ पर भी active times मिल जाएगा, that when is it that your target audience is going to be engaging with your stories. फिर आप उसे शेयर कर दें, स्केड्यूल कर दें. स्टोरीज आपकी स्केड्यूल हो गई, पोस्ट आपके स्केड्यूल हो गए, राइट? वीडियोस आप यहाँ पे अच्छे से बना सकते हैं. देन व्हाट एल्स डू वी नीड? ऑल वी नीड इज अ प्रॉपर प्लान, राइट? एवरी मंथ हमारे पास प्लान हो, उसका कंटेंट बन गया हो, एंड देन वी आर एबल टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड प्रॉपर्ली. ओके, राइट? या ये जो हमने कंटेंट क्रिएट किया, इसको हम यहीं से स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं फेसबुक
और हाँ एग्जैक्टली यहीं पे ये ऑप्शन आ रहा था ना आपके वहाँ पास, पे दैट्स व्हाई वी यूज। थोड़ा बैक करके स्क्रीन में मैं देखना चाह रही थी सर उसको। सो अगर आपको स्टोरीज ऐड करनी है, यू क्लिक ऑन क्रिएट, यहाँ ड्रॉप डाउन, क्लिक ऑन क्रिएट स्टोरी। जो भी आपने मीडिया या अपनी इमेज बनाई है, शेयर करी हुई है, वो आप अपलोड कर लीजिए यहाँ पर, राइट? For example, this one you wanted to add as a story, just upload it over here, and then you can share the same post on story on Instagram as well as that on Facebook. Okay? ओके फाइन। All right. ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड है ना, अगर मैं फेसबुक पे काम कर रहा हूँ तो इंस्टा पे चला जाएगा डायरेक्टली हाँ ना? जी, हाँ जी। लिंक ऑलरेडी है मेरा अकाउंट लिंक इसमें। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रिएट पोस्ट की या क्रिएट स्टोरी की, तो जैसे अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे खाली फेसबुक का साइन दिख रहा है मुझे, राइट? आप इस पे मतलब क्लिक कर लीजिए और इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लीजिए, तो अब आपको फेसबुक इंस्टाग्राम अगर दोनों जगह दिख रहे हैं, दैट मीन्स आप जो भी स्केड्यूल कर रहे हैं या जो भी आप पोस्ट करना चाहते हैं वो दोनों जगह जाएगा। करेक्ट, मीन्स आई कैन सी फेसबुक थोड़ा इजी टू वर्क है, और इंस्टा पे मतलब अगर आप लैपटॉप से या कहीं से भी काम करिए बल्क में कर लें कंप्लीट शेड्यूल। लास्ट ऑप्शन इसमें सेव एज ड्राफ्ट है, तो ये क्या शो होता है? I mean, सेव एज ड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपने कंटेंट बना के यहाँ पर सेव कर दिया ड्राफ्ट की तरीके से। आपने ना उसे स्केड्यूल किया, ना अभी उसे पोस्ट किया, आपने बस बैकएंड में सेव करके रख दिया कि जब टाइम आएगा तो हम उसे स्केड्यूल कर लेंगे या फिर पोस्ट कर देंगे, राइट? जैसे हम कोई ईमेल बनाते हैं और हम नहीं चाहते कि उसे इमीडिएटली हम सेंड करें, तो हम उसे ड्राफ्ट में रख देते हैं, राइट? और उसके बाद जब सेंड करना है तो सेंड कर देते हैं। दैट इज व्हाट सेव एज ड्राफ्ट वुड मीन ओवर हियर। All right. So I think for today, I've given you a lot of technicalities and things to do for the next week as well. And again, I will list down your assignment later tonight or early tomorrow morning as to what you'd have to be doing. But mota mota, primarily, what I would want you guys to do is कि आपकी Facebook page की entity with your now newly made logo, with your bio, with your branding should be there. आपके messenger automation में जो 4-5 questions हैं, those should be set up, right? And if possible, if just possible, and I think I really want now कि अगर आपका Instagram page बन गया है, Facebook page बन गया है, create 10 posts. I'm not saying more. In a week, if you can create 10 posts and schedule them, 10 images, 5 stories. Reels पे अभी नहीं आ रहे, and I'm saying 10 posts might sound very big, but I'm seeing there are already like 39 participants over here and couple of more on YouTube. तो अगर आप सबको यूज कर रहे हैं collectively as a team, टेम्पलेट्स बनाने के बाद अगर हम 10 पोस्ट भी अभी फिलहाल इसी एंड ऑफ जनवरी के लिए ही स्केड्यूल कर देते हैं, इट वुड बी अ वेरी गुड ट्रैक्शन फॉर यू. You'll be able to see now is the time to learn from the mistakes as well. So if you're doing mistakes, kar lete hain. Okay, so I'll put that up on your assignment charts as well for you guys to see. But yeah, open for questions now, guys. Yeah, I just need to check. Sorry, Manoj, please go ahead. सॉरी ये स्टोरी की जैसे आपने बात किया, तो इमेज इज फाइन, स्टोरी में इट्स काइंड ऑफ वीडियो, या फिर उसको अगर मैं सिंपली समझना चाहूँ तो? Story basically is a format. Just sorry, give me 1 second, guys. Sorry, 1 second. Sorry about that. Yeah, so Manoj, story is a format that we basically add. अगर आप Instagram पे देखेंगे कि जिनको भी आप फॉलो करते हैं तो ऊपर राउंड सर्कल में आप दिखता है, उनको क्लिक करते हैं, आप देखते रहते हैं, स्टोरीज आ रही है, व्हाट्सएप पे भी स्टोरीज आ रही है, वही सेम चीज. इट कुड बी अ नॉर्मल इमेज, इट कुड बी अ वीडियो, एनीथिंग दैट यूड वांट टू बी अपलोडिंग देयर. Okay, Facebook page particular should always be public, don't make it private. All right. Okay, thank you. Yeah. Yes. Yeah, I wanted to check on one thing. मेरे पास एक account already है, which is a community. उसमें Instagram was connected.
So whenever I'm posting anything on Instagram, it directly goes to the Facebook as well. Sorry, can you repeat that? Whenever I'm posting anything on Instagram, it directly goes on the Facebook account as well. But because I've not been using Planner, so whenever I'm using the Planner, it shows me connect Instagram to click it. When I connect it, it says that you are connected, and the next moment it says it's not connected, connect again. And I can do it 100 times, it's still not connected. Did you by any chance previously use any kind of external scheduler or a planner like Hootsuite, Buffer? कभी ये इस्तेमाल किया था क्या? That was used on different accounts. It was not even touched on this one. All right. So what you'd have to be possibly looking at is, completely Facebook page पे अभी जो वो पुराना Facebook page होगा, just see linked accounts में if it is showing empty, right? And open your Facebook page in an incognito page, right? और वहां पे अपनी cache history delete करके then try doing things once. That should possibly solve the problem. But if it still persists, the best people to help you with that would be the Facebook help itself. Could be there's some issue with I that. actually wanted to understand because I have written there as well, but I've not really got any resolved situation in that. Yeah, so majorly what could have happened is कि कभी Instagram को लिंक करने की कोशिश करी होगी, वो complete नहीं हुआ होगा, लेकिन backend में वो save हो जाता है, जैसे cache file save हो जाती हैं. So if you just try and delete your cache once and do it from an incognito mode once, that's what I'm saying, that 99% solves the problem. In such cases, try doing that once. If that still does not happen, then we'll figure out seeing what's exactly the issue cropping up. Thank you. All right. Yes, Rakesh ji. सर मेरा एक क्वेश्चन था आउट ऑफ द सब्जेक्ट है. मैंने आपको जैसे मैसेज भेजा कि आई वांट टू लूज वेट, राइट? उस पे आपने इतनी अच्छी अच्छी फोटो पर दिखा दी, तो मेरा तो 2 पाउंड वेट बढ़ के देख देख के. नहीं, अब उतनी अच्छी फोटोज मत दिखाइए, फिर लौकी कद्दू दिखा दीजिए. जस्ट किडिंग. थैंक यू. राइट. ऑलराइट. यस शिखा मैम. हेलो प्रियश, एंड थैंक यू सो मच. बहुत सारी टेक्निकल चीजें आज सीखी हैं, एंड थैंक यू लवलीन दीदी फॉर ऑल्सो. मेरा क्वेश्चन था, ये हमारा कम्युनिटी फेसबुक पेज है. अगर हम, क्योंकि ये तो रन हो रहा है मैम दीदी के थ्रू, अभी हम जो है अगर अपना FB पेज बनाना चाहें जिसपे हम अपना ही कंटेंट डालते रहें और उसको अपडेट करते रहें, वो हम कर सकते हैं? Again, I think Loveleen ma'am, would you want to take this up? Ideally, तो it would be not related to that content. If not related to that content, if you want to be just doing it for yourself, something else. I mean, अगर कोई आप business page बनाना चाहते हैं, yeah, absolutely. जैसे मैं इंस्टा पर अपनी स्टोरीज डालती हूँ, रील डालती हूँ या पोस्ट डाल रही हूँ, और मैं उसे FB पेज बना के कनेक्ट कर देती हूँ. So only for that. Absolutely. Right. JP sir. Good evening. It's very, really very exciting and very technical also. And that is really we have to go for a lot of exercise and lot of that we can reach there. And my two question is there, like the one I already Madam Sikha has asked. So I think Loveleen ma'am will take over the next step. Then the first one is you have given we always use the free template for the poster and that. So means if there will be some chargeable, so there is some difference between the free and chargeable. So free वालों में क्या होता है that they are copyright free. यानी अगर आप उन्हें यूज भी करते हैं तो कोई क्लेम नहीं कर सकता ट्रेडमार्क, या आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा. पेड वालों में क्या होता है, आप उनको फ्री में यूज नहीं कर सकते हैं. अगर आपको उन्हें यूज करना होता है तो आप उस क्रिएटर को थोड़ा पैसा देते हैं कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, अब मुझे आप कभी सू मत करिएगा अगर मैं आपका क्रिएटिव यूज कर रहा हूँ. तो आप कॉपीराइट क्लेम नहीं लगा सकते क्योंकि मैंने इसके पैसे दे दिए. ओके ओके, मतलब वो थोड़ा सा बेटर होता होगा. हाँ, वो बेटर होता है इस सेंस में, क्योंकि अगर आप फ्री टेम्पलेट्स यूज करते तो कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई और भी उस फ्री टेम्पलेट को हो सकता है यूज कर रहा होगा, राइट? तो वो एक कभी प्रॉब्लम आ सकती है इन अ सेंस कि यार ये पोस्ट तो मैंने उसके चैनल पे भी देखा था, ये पोस्ट मैंने आपके उस पे भी देखा, राइट? अगर आप पेड लेते हैं तो आपको पता है कि वो बहुत कम लोग होते हैं जो पैसे खर्च करके इमेजेस या टेम्पलेट्स खरीदेंगे, राइट? बट एट दिस स्टेज यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट. अभी बस आप फोकस करें, दे धनाधन कंटेंट डालें.
So second question we have given very good for the sale. You were on the earlier you were on sale. So then you are mostly using the ABC. So just I forgot that what is the stand for ABC? It basically means always be closing. यानी कि as a salesperson, not only just a salesperson, अगर मैं एक business entity चला रहा हूँ या if I'm meeting certain people for any kind of business interest, मेरा end goal यही होना चाहिए कि मैं उनको दुनिया भर का ज्ञान तो दे दूं, लेकिन उस ज्ञान के अवश्य में मैं उनसे या तो अपने कम्युनिटी में जोड़ पाऊं या उन्हें अपना प्रोडक्ट बेच पाऊं. तो हमारा जो माइंडसेट होता है, मेंटालिटी होता है, दैट इज always to be looking for different kind of opportunities to close them. And when I say close them, either make them join the community or make them purchase our products. That is what it means. That's good. So that mindset should also be there on our डिजिटल कम्युनिकेशन. जो भी मैं पोस्ट लिख रहा हूँ, पहले तो मैंने फायदा बताया, फिर मैंने उनके दर्द को हाईलाइट किया, फिर उनकी जरूरतों को हाईलाइट किया, फिर सोल्यूशन बताया और फिर बताया कि इस सोल्यूशन को आप कैसे पा सकते हो. दैट इज इट. Right. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes, no problem. Shalini ma'am. Good evening, Priyash sir. Thank you so much, Loveleen ma'am. My question is that how can we make a professional dashboard on Facebook? When you say professional dashboard, आप वहाँ पे वो insights के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, देखने अभी के लिए? मेरा जो Facebook पे अकाउंट है, इट्स नॉर्मल. हाँ, तो वो पेज बनाना पड़ेगा आपको. तो वही आप स्टेप्स जो आपने देखे हैं अभी, जो हमने शुरुआत से करे हुए हैं, वो बेसिकली आपको एक नया बिजनेस पेज बनाना होगा. तो इफ यू विल गेट टू सी दिस रिकॉर्डिंग अगेन, यू विल एग्जैक्टली बी एबल टू सी. प्रोफाइल पे ही जाके वहां पर एक मेन्यू का ऑप्शन आता है. मेन्यू ऑप्शन पे आप पेज पर क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी चीजें हमने करी हैं उस वो पेज पर आएंगी. ओके सर. Okay. ठीक है, I will try, sir. Thank you. Yeah, Sheenu. Yeah, Priyansh, Ashish here. Yeah, go ahead. Just a question. I was trying this meta business yesterday with one of my partner. Mhm. So we were trying to put in उसमें एक reel डाल रहे थे, and I was trying for this collaboration option, and I could not really. So that collaboration option right now is available only on Instagram, right? If you're going to be doing it through Meta Business Suite at the moment, it's not going to be visible. It's not going to be added. So you go on Instagram, and from there, when you're sharing, wahan par you can add a collaborator, right? If you're uploading through the Instagram mobile app interface. All right. Okay. So one more question. Which one is easy? I mean, I also see this Meta Business Suite on Android also. So which one would you prefer? Using it on laptop or laptop is better? Yeah. Got it. Perfect. Thank you. Yeah. No worries. Any other person who's left with any question? Yeah, Manoj. जी, इसमें एक आपने जैसे बताया कि अकाउंट जो होगा अभी हमारा जो कम्युनिटी का होगा, तो विल बी पोस्टिंग फ्रॉम दैट ओनली ना, बिकॉज वो एक ही कॉमन अकाउंट होगा. कंटेंट वी विल मेक इट आउट एंड देन इट विल बी शेड्यूलिंग एंड ऑल विल बी डन विद दैट अकाउंट ओनली. Exactly. That is point number one. Subsequently, we also have some our Insta account personally, तो वो तो अलग रहेगा. So in the meantime, if we want, then we can replicate the same thing on that account also, same content. Same content, whether you can replicate or not, I think that would again be a call to be taken by I think it would Loveleen not be ma'am. needed. It is always better to have the common this account wherein we will push What all this. if you have, what you should be doing ideally is कि जो content आप बना रहे हैं, because वो THT branding का होगा, THT के लोगों का होगा, सब कुछ होगा, तो वो THT पे ही जाए. अगर आप अपने personal पे कर रहे हैं तो वहां पर आप different तरीके का content बना के लोगों को भेजें THT पर. तो नाउ द पॉइंट इज कि जितना भी कंटेंट बनाना है हमारे को स्टैंडर्ड बनाना, और जो दीदी ने हम लोगों को राइट मिल जाएगा टू पोस्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ओनली. Exactly. Understood. All right. Cool. सर इन दैट केस जो क्वेश्चन अभी जो पूछा मनोज जी ने, जो टीएसटी का कंटेंट है उसको एज ए लिंक हम शेयर कर सकते हैं ना हमारे पर्सनल उस पे. हाँ, अब जैसे टीएचटी का आप क्या कर सकते हैं, आप टीएचटी को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, राइट? तो अब टीएचटी पे जाके आपने जो पोस्ट देखा उसको आपने शेयर कर दिया अपने स्टोरी पर, अपने अकाउंट पर. ये चीज हमें करना ही करना है.
टीएचटी पे जो भी कंटेंट जा रहा है वो सारे लोग यहाँ मिलकर अपने अपने इंडिविजुअल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करेंगे, ताकि आपकी जो फॉलोअर्स हैं वो देख पाए कि अच्छा आप एक टीएचटी ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं और आप एक लगातार कंटेंट पर भी फोकस करें, बिकॉज वो हेल्थ फोकस कंटेंट होगा, उसको रीपर्पस कर लीजिए, राइट, शेयर करके। Okay, all right. And in fact, you should actually be sort of like creating, some kind of competition. कि अगर यहाँ पे the 33, 35 people who is working very aggressively to bring in more followers for themselves, and that particular person could become the influencer for THT itself. Right, so that should also be an idea. Everybody should collaboratively working towards increasing their own personal followers as well, ताकि जब आप THT का content बढ़ाएंगे, share करेंगे, then it is also going to be helpful for THT as a community as well. तो वो लिंक हम स्टोरी पर भी शेयर कर सकते हैं अपने से। Absolutely. थैंक यू। Sure. Anybody else who's left? लवली मैम लोगों के लिए भी हमें बताएंगी फिर then we'll Yes, we're sharing that. Yeah. Okay, ma'am. Tomorrow, we meet tomorrow, Thursday also, and now the logo will be shared. It's finalized. Okay. And all the templates as well. Yeah. Right. So any person who's left, any further questions, or are we all good for today? Yeah, it's set to go. Perfect. Cool. Then thank you so much, everybody. I hope आज आपको और गहराई पता लगी होगी of the background. Priyash, Yeah. just before signing off, I just wanted to know that tomorrow Digital Vidya might not be working because it's a national holiday. So can you please share the task today itself for this session so that I can forward it to Loveleen ma'am, or Friday, ma'am, whichever day is, like if it's ready, if you can share it today, I can send it to the We're team. okay either way. That's fine, Hitashi, just because we already know what we have to work on. So it's okay even if. Yeah, so I'll put it on the sheet probably little later, but again, as I said, majorly Facebook page with your branding, right? Set it up with your messenger automation, link it with your Instagram account. These three things are primary, and ensure that you are able to create at least 10 posts that you can schedule on your Facebook and Instagram. These are your 4 major tasks. Right. One actually question about the Google form. What's the most effective? Because definitely we're going to have a Google form. So what are the things that are most effective? Also, since we're people from, we're a community, but then people have their individual businesses. So definitely we want to put who referred you if they came through a referral. So first and foremost, for any kind of form, you have to try and understand that it should not be very lengthy. So be as concise as possible. Now, what I would suggest, and that could be something that you guys have already been working on, that is that you divide the referrers into different zones, maybe, or different teams. Right? For example, there could be a couple, if there are sub team members over here as well who might be heading their own legs, would be much better that you divide it in that way, right? So that the user can actually select that they were either referred by this team member or from other team member. Now, if that is going to be creating confusions for the user, then just leave it blank. Just simply ask they people would to put, add name. Yeah, they themselves could go ahead and put the name. Absolutely. Because we could have 1,000 people referring. Exactly. Yeah. Eventually. So I you just can't thought really- that while I was giving you that solution, it makes much more sense that people actually type it themselves who was the one who referred. And in fact, of course, the referrer would also have to educate the user that if you are that we going to will. be filling up the Google form, please ensure that you add my name in the referrer. Absolutely. Yeah. All right. Okay. Wonderful. We'll work on that too. Cool. Lots of. All right. Anybody else? जो गूगल फॉर्म है ना, इसमें हम बेसिकली लवलीन दीदी गूगल फॉर्म में हम ये भी कर सकते हैं कि जो उसका जो एक्सेल शीट होता है, गूगल शीट, उसको हम शेयर कर सकते हैं उसका लिंक, बट उसमें हम जो ईमेल आईडीज पे शेयर करेंगे कि वो देख सकते हैं अगर उनका कोई बेसिकली मेन पर्सन को। सो उसमें क्या होता है कि एडिटर का और व्यूअर का दोनों का ऑप्शन होता है, तो nobody edit
बट वो देख सकता है, तो मतलब ये एक चीज हो सकती है इफ पॉसिबल। अदरवाइज तो मतलब उसमें एडिटिंग अगर करेंगे तो कोई कुछ भी एडिट हो सकता है, तो एडिटर का राइट एक के पास रहे एंड व्यूअर का राइट अगर इनकेस लोगों के पास रहे तो हो सकता है गूगल शीट के थ्रू जो गूगल फॉर्म। Right. We'll definitely work on that. Yeah. Cool. So, ma'am, We're I've just gonna stay back as usual for about 5 minutes, just no to. worries. So I'm pausing the recording and I've given you the host access as well, ma'am. Thank you. Right. Thank you. Cool. All right, everybody. Thank you so much and happy Republic Day and take care of yourselves. Bye, Thanks, everyone. everyone. Thank you. Bye. Thank you, Priyansh. Thank you so much. Appreciate. We'll see you next week. Yeah. Bye bye. Thank you. Everyone else, please stay on. Don't log out yet. Okay, wonderful. Any comments before we see what needs to be done? We initially thought that it's going to be 4 basics and 9 core steps, but now it's project management also. Yeah. Yes, absolutely. Right. I can just visualize how much work I have ahead of me, but you know, with everyone already it's been you know, whoever has jumped, especially Shalini, you know, so many of you have just jumped forward and taken over, and that's wonderful. And henceforth we'll obviously be doing that. So today my main thing is we've worked on some templates. Tomorrow, are we okay? Like, I know it's a holiday in India, but are we still okay to meet at our schedule 9 p.m.? Okay. Okay, no issue. All right, all right. And if a couple of you can, that's okay. So we have a lot of things to do for tomorrow. I have written what all we need to do, but before that, Shalini, so now we need that logo shared with everyone, the different renditions of it. And second thing, when you had done the THT with the 3 colors, that bluish tone and the dark green and this light green that we're using, so we just want the colors for that. क्योंकि वो ही कलर्स फिर हम अपने टेम्पलेट्स में यूज करेंगे और उसका you know obviously 19-21 का फर्क रहेगा, but so we at least have those colors. I guess you know, Mr. Tokus helped me with his premium account for that. Okay. That was the one he's given. Yes. So what we can do is, if you can help me with that, because we can create PNGs. I've already done it, but set PNGs and templates for everybody to use, because that if it comes out of premium, because my one, when I extra use it, it comes out to be Canva printed. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दोबारा से एडिटिंग राइट्स दे दूंगा ना, तो उसमें देन यू कैन डाउनलोड PNG and plus we can make our Canva. I think SN Tokus आप ही ने बताया था ना, there's that. या यस दीदी, उसमें ना कैनवा जो प्रो का है ऑप्शन, वो मैंने बात भी करा था, तो उसमें मतलब अगर इनकेस आप एक्चुअली उसमें ना देयर आर सो मेनी देयर आर सो मेनी स्कैम्स ऑल्सो। मतलब वहां पर क्या होता है कि अगर हम मतलब कई बार हम सस्ता वाला ले लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 249 में 199 में कैनवा प्रो देते हैं, बट वो मैंने कई बार देखा है, एक बार मेरे साथ भी हो चुका है कि उसमें मतलब वो लोग जब देते हैं ना तो बाद में मतलब वो स्टॉप हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने दे रखा होता है। तो जेन्युइन अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, sorry I'm interrupting you, but why not just get it from Canva? Why are we getting from a third party? उसमें तो बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ना अगर सपोज मतलब एक है ना प्रोवाइडर अकाउंट जैसे ले लेते हैं, टाइप ऑफ प्रोवाइडर अकाउंट जो वो मल्टीपल अकाउंट्स को मतलब सेल कर सकता है, वो सेलर रीसेलर अकाउंट होता है कैनवा का, जो लोगों ने लेके रखा होता है और वो फिर रीसेल कर देते हैं, तो वो मतलब अराउंड 100-500 लोगों को रीसेल कर सकते हैं, ऐसा उनके पास अकाउंट्स होते हैं, इसलिए वो सस्ता होता है। अगर आप कैनवा से लोगे तो कैनवा से तो बहुत महंगा पड़ता है, कैनवा से तो आई थिंक अराउंड 3500 2900 समथिंग ऐसी कुछ होता होगा per month. तो वो No, per year I think it's 4,000. a per year. Yeah, 4,000 rupees. बट ये जो लाइफ टाइम वाला मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने उस टाइम पे बेसिकली 499 रुपीज में लाइफ टाइम वाला लिया। अभी तक मेरे को अराउंड 3 साल हो गए, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसमें, जब कोविड का फर्स्ट वेव था तब लिया था। So SN, for our community Canva account, I will purchase that the yearly from Canva itself. So at least for our account, we have that.
But now the only issue is जब हम किसी के साथ एक पेड अकाउंट से शेयर करते हैं पर उनके पास अब कह लो कि हम 100 मेंबर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, कंटेंट, तो वो तो नहीं कर पाएंगे वो यूज। वो नहीं कर पाएंगे। आप ये कर सकते हो, एक बार आप कैनवा का ना रीसेलर अकाउंट एक बार ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो उनसे। और अगर वो रीसेलर अकाउंट जो है उसमें हम पर्टिकुलर लोगों को जो जो इस पे कंटेंट बना रहे हैं ना उनको दे सकते हैं राइट्स। दूसरा जो अभी प्रियाश ने बताया ये भी कर सकते हैं कि प्रो अकाउंट लेके और हम वो एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से ले, लाइक हमारी कम्युनिटी का जो ईमेल आईडी है, और वो, या फिर हम एक ईमेल आईडी पर्सनली ले जिससे हमने प्रो अकाउंट ले लिया, उसका हम शेयर कर दें सब लोगों के साथ जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और इन पर्टिकुलर अगर किसी पोस्ट का हमें कंटेंट क्रिएट करना है, किसी कंटेंट के ऊपर अगर हमें शेयर करना है, वो हम कर सकते हैं इजिली। वो राइट हमारे पास होते हैं, जैसे मैं शालिनी के साथ कर देता हूँ तो वो हम इजिली कर सकते हैं। बट अगर वो Okay, ज्यादा ठीक है, में we करेंगे can तो discuss प्रॉब्लम है। that, we can discuss that and find out what's the best option and I'll do accordingly. Hanji. No problem. It is easier because the core team can have the same link, who know how to access it properly, and they will not be deleting it. Later, the other people, because there will not be various people who will be using it also. Yes. We will be giving them simple templates, which can be used in free templates as well. Once the logo is out, nobody requires a pro package for that. So I think if you can help me with that, we can just take out the PNGs, share it with everybody in the document, let them download it, see and play on Canva for a few days. Okay. You can include me in that too. When you guys meet, if it's a feasible time for me to be up, I'll get included on your meetings as well. Okay. Okay, all right. So we will meet tomorrow, but the things now we have to do, as Shalini is already, you know, we have a page already, we now just have to set it up according to what we learned today, right? So that will be the main thing. Then we've got our bio, and Lumen, we've got to do a paid account. So for our community, we have to do a paid account. And Google Forms. So we can set up teams for this, right? So who's experienced in the Google Form? अभी किसने बोला था? Google नहीं Form. दीदी, हमने बनाया Oh, ऑलरेडी। but let's get somebody else on the Google Form, maybe. वो दीदी बेसिकली उससे ही होगा, अपना जो ईमेल आईडी है कम्युनिटी का उससे ही बनेगा। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। देन हम इसके बाद है ना, एक पॉसिबिलिटी अगर हो तो इस सेशन के बाद एक जूम मतलब जूम पे कनेक्ट कर लेते हैं, शालिनी एंड जो लोग भी इसमें रहते हैं, तो उसमें फिर हम स्क्रीन शेयर करके हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को। Okay, fine. Yeah. All right. So before I assign tasks, is there anybody who's like, yes, I want to take this task? I'm waiting. Manoj, which are we talking about the Google form then? Didi, when the concises of the Google form content and all that, I can make it out. But how to create that, I'll learn the focus and all, and we can make it out together. Okay, great. All right, wonderful. Because we just want like maybe 3 or 4 maximum questions. I do have something also, so we can work on that. So I think for tomorrow, Abhi, these are the few things. So we can do brainstorming and see what all things we want on the Google form. Then Facebook page, we can actually, maybe tomorrow we can just work that. We can just work on the Facebook page. Yeah. When we get together, that would be the main thing to do. Tomorrow So 9 p.m. Didi? Hanji? Tomorrow 9 p.m. right? You said? Yes. Yeah. At 9 when we get together. And in the meantime, so the Facebook page and the bio. So last meeting, we had talked about the bio and I somehow totally forgot about that. So I'm going to do that and then we will just finalize it tomorrow. So these 2-3 things. Then we can start creating the content according to, putting our logo and we've already created 2 or 3 templates. So we'll share that on the main group now. Okay? If I already haven't shared. Okay, that's it. So let's do some work today and then meet tomorrow at 9 p.m. And SN Tokus and Shalini, let me know what time if you're meeting today or not, and then I'll join in.
whatever time that is. Yeah. And then Manoj, maybe you can join in as well. So tomorrow, Didi, or today? Meeting for. I mean, नहीं, today तो अभी late है. कल किसी time during the day also. ठीक है. Yeah, right? For Google form, right? Yes, yes. Google, and just generally Google form, the templates, just, you know, and the logo, the colors. Yeah, yeah. Cool. Okay. Any questions before we leave? Any comments? That's awesome one. We good? Yeah, yeah. So now the actual work starts, where we're starting to post. One question actually I have, when he was talking about these 10 posts, is he saying that we're actually scheduling or actually doing those posts this week? Posts as well as both, I guess, scheduling it and posting. So we're actually putting them on our page this week. Yes. Meaning our page is going to be up and running now. Yep. Right. Okay. Let's say, And Shalini, yeah. It's 25th today, so we can actually schedule it from first. In next 5 days, we can all club content, and I've already shared in the group if anybody requires. Okay, great. Yeah, because I was just going to say that just to get that calendar, and then we can add to it also. Okay, wonderful. All right, everyone, good night. Happy holiday. Happy lots of working tomorrow. Okay. Yes. Thank you, guys. Good night. Good night. Thank you.